Can't turn on mic. Yes, I have turned it off. Hee. Okay. 1 second. Why are you guys not able to turn on your mic? Oh yeah. Okay. What I'll do is I will let you guys turn on your mic for 30 seconds. If you guys want to say hi, if you guys want to just appreciate or do anything. Let me just turn it on for a moment. All of you can you please just turn on your, I'll unpin the slides. Just unpin your just Hello. Hi. 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 हेलो वे चेहरा भी दिखाओ यार, Hello. रोबोट से बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ चेहरा भी दिखाओ, क्या कर रहे हो? है वो All of you, रेफरेंस भी come दिला on. दो यार। एक सेकंड. How can I see all of you at once? हाँ ऐसे. Ooh, yes, please turn on your cameras, guys. Hello. चेहरे देख के मजा आ जाता है लोगों के. वाह, थोड़ा खुश रहो यार. क्या कर रहे हो? कितने दुखी क्यों हो तुम लोग? डांस दिखा दो फिर, डांस करते हैं फिर। जो तुमने डाला है ना बेटे चैट में, तुम अब मुजरा करोगे सबके सामने, ठीक है? मैं नहीं जानता आपको, बाय बाय। हाँ. मुजरा होने वाला है आज तुम्हारा, सबको पता है. सबको मैंने प्राइवेट में मैसेज किया था कि सक्षम मुजरा करने वाला है, इसलिए इतने लोग आए हैं, ठीक है? ठीक है। Cool guys, pretty faces, just say hi. एक दूसरे को देख लो. और शायद मैं अपना अपना चेहरा और मेरा प्रेजेंटेशन पिन करूंगा तो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू सी ईच अदर. सो वन फाइनल मोमेंट ऑफ लुकिंग एट ईच अदर्स फेस. बस अब मैं खुद को पिन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं खुद को और मेरे प्रेजेंटेशन को पिन कर रहा हूँ. डन. प्रेजेंटेशन भी हो सकता है क्या पिन? हो तो जाएगा, क्यों नहीं होगा? Already pinned है sir. Crazy. One second. हाँ, everyone, I am visible. Presentation visible. Just give a thumbs up and I'll just get started immediately. Okay, cool. Welcome to today's session, guys. मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा because I love doing that, because those 5 slides are my favorite slides and it is recording, so don't worry, ये सारी recording तुमको मिल जाएगी. People who are saying they are joining my session for the very first time, there is no seriousness in this whole session. थोड़ी बकचोदी होगी, थोड़ा फन होगा, एंड एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि तुमको इतना सारा आउटकम मिल जाए कि एंड ऑफ द सेशन यू आर एबल टू टेक एन एक्शन rather than just being like, oh, just got a lot of knowledge dump, let me sleep over it. ये सब नहीं होगा. You guys will be able to take proper actions because मैं actionables, templates, ये वो फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें देता हूँ, right? So yeah, let's get started. We will be talking about case study. We will be talking about case studies. Guys, अगर मैंने तुम लोगों का माइक बंद रखा है तो ठीक है, बट एटलीस्ट यू गाइस कैन सेंड रिएक्शंस एंड टर्न ऑन योर वीडियोस. माइक अभी ऑन नहीं कर पाओगे, शेयर योर स्क्रीन नहीं कर पाओगे, वो हम बाद में करेंगे सब चालू, ठीक है? बट या लेट्स गेट गोइंग. चैट बॉक्स इज ओपन, एवरीबॉडी कैन स्टार्ट chatting. Okay, मेरा एक सिंपल सा सवाल है. How many of you have a portfolio and how many of you don't? Only people who don't have a portfolio, can you raise your hands? Don't have a portfolio. Amazing. Oh wow, 30. भाई साहब, ये क्या मजाक है? तुम लोग डिजाइनर क्यों हो? पोर्टफोलियो क्यों नहीं बना रहे हो तुम लोग? Okay, around 30-35 people. How many of you have portfolio? People who don't have, can you please take down your hands? How many of you have portfolios? Can you raise your hand? Okay, I think half the audience have portfolio. How many of you are not getting a job with the existing portfolio? Oh, not getting a job. 34 of you not getting a job with our existing portfolio.
Oh, Robin, you got one recently. Sure. Probably the person who hired you was good. Okay. Perfect. I think people are not getting job and that's why they are here. But anyways, that's what we are solving today. So, welcome to case study ka funda, right? But before we get started, let me introduce myself. Hi. आगे भी है, रुको बोल रहा हूँ, स्लाइड नहीं चल रहा है इसलिए रुक गया मैं. चल गया. Hi, I am Rajan and I started as a photographer. I guess तुम लोग सबने ये वीडियो देख लिया होगा, तो half of you already know the story and people who had already joined the last session, you already know what is coming ahead. So please shut your mouth and sit here, okay? I started as a photographer. I did photography, but due to some reasons, I had to shut it down, right? And then I also tried acting, but obviously I gave auditions, I got selected, I did this and that. But due to my very, very, very bad acting skills, I had to become a designer. And today I am a designer और Instagram पे ज्ञान बाटी करता हूँ 10.5 के. Thank you for 10.5 के followers, guys. Thanks a lot, thanks a lot. इस पे वीडियो नहीं बनाया, but बनाने वाला हूँ मैं. But yeah, thanks a lot. Yeah, I became a designer because of my all bad acting skills. These are my dogs. These guys are people who I brainstorm design with, and these are the guys who I actually have most fun talking to or brainstorming with, right? These two get a little bored when I dump my stress on them. So they also have their own entertainment, and his name is Bobby. This is a he, this is a he, this is a she. He. Noddy, Coco, and Bobby are their names. But this is what I am. This is about me, and this is how I will talk throughout this presentation because, as I said, no seriousness. That's about me. And today I am here with a friend. Who is the friend? कौन है ये? क्या करने वाला है? वो सब अभी हम आगे presentation में देखेंगे. I'll try to keep it as simple and as quick as possible so that we move ahead and you guys are actually able to start working on your portfolio because मैं तुम लोग से ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ. आज रात को तुम सबका पोर्टफोलियो लाइव चाहिए. अगर नहीं हुआ तो मैं अंडी मंडी संडी करूंगा कल मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है? I don't know how many of you know the meaning of that, but please आज रात को ही बना लेना अपना portfolio. Okay, I am here with a friend who is fed up with creating different portfolios. फ्रेमर के टेम्पलेट्स ट्राई कर लिए, ज्ञानी बाबा लोगों के फ्रेमवर्क्स ट्राई कर लिए. ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ऑल द पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड दैट ही वांट, बट फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है महाराज को. तो इसीलिए मैंने सोचा यार चलो उसके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं और उसके हेल्प करते करते तुम सबकी भी हेल्प कर देता हूँ, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस गाय? चैट में बताना जरा कौन है ये. ही इज फ्रॉम रामगढ़, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट. Oh, most of you know. Guys, no offensive comments in the chats, please. Cool. I will not give you guys context, but they're a very internal joke just happened, but okay, let's go ahead. Yes, his name is Gabbar. Most of you know him because of Rohit is saying Rajan Dube. No, bro, this is me. Rajan is this. That is Gabbar, not me. Okay. Gabbar came to me with the problem that, hey, portfolio ने तो नींद हराम करके रखी है. कैसे बनाऊं portfolio अगर numbers ही नहीं है मेरे पास, right? अब this is something जो सबके लिए problem है, right? And that is exactly why I think all of you guys are here. And I have made sure that the slides that are going to come ahead are actually something which is actionable at the first place, gives you a template on what to work with, and also gives you a little bit of confidence कि अगर तुम्हारे पास numbers नहीं है दिखाने के लिए तो तुम क्या दिखा सकते हो. Because believe me, I have a lot of DMs on Instagram, and all the problem that lies is कि यार हमारे पास numbers ही नहीं दिखाने के लिए हम क्या करें. So there is special section. स्पेशल क्यों बोला मैंने? स्पेशल होता है भाई, स्पेशल. हाँ, there's a special section at the end जहां पे मैंने clearly ये define किया है कि if you don't have numbers as in matrix, जैसे पोर्टफोलियो पे डालते हैं ना 40% इंक्रीमेंट इस पे ये उस पे वो ऐसा वैसा, वो अगर तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमने
एक्चुअल यूजर्स को दिया ही नहीं है, तुमको कंपनी से निकाल दिया गया आफ्टर यू लॉन्च द फीचर, इन दैट केस यू विल नॉट हैव नंबर्स, राइट? सो उस केस में हमको चीजें किस तरीके से बतानी चाहिए, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. कूल, फेयर, ओके, ऑसम, लेट्स मूव अहेड. सो या गब्बर मेरे पास आया कि भाई अरे और सांबा, पोर्टफोलियो ने तो मेरी नींद हराम करके रखी है, कैसे बनाऊं पोर्टफोलियो अगर नंबर ही नहीं है मेरे पास, ऐसे रोते रोते बोला उसने. बट ऑब्वियसली मैं एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं रो पा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसका चेहरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया. बहुत ऑफेंडेड था वो, बट मैंने डाल दिया. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट, एंड दैट इज हायरिंग मैनेजर्स कितना टाइम स्पेंड करते हैं तुम्हारे पोर्टफोलियो में? तुमको क्या लगता है? 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा? दैट इज माई अश्योरेंस टू यू. 5 नहीं भाई, थोड़ा तो टाइम देते होंगे. Hiring managers on average spend approximately 20 seconds through your portfolio, and कोई भी तुम्हारा portfolio पढ़ नहीं रहा होता है. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे who actually have written the portfolio but have written it in such a verbose manner that nobody wants to read it, right? Because obviously people are moving from typing, moving away from reading. They are more of a visual consumers now. They are more of a audio consumers now. How do you make? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम portfolio में video पेल दो, तुम ऑडियो फेल दो, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि यार वर्ल्ड हैज मूव्ड टू अ प्लेस वेयर a lot of people have stopped reading. How do you optimize for less readers, right? Not everyone is a book reader, not everyone is a blog reader, right? How do you make sure that people actually read what you are showing? And that is exactly what we are going to talk about today. So let's just move ahead. This is the reality, right? 61% of people actually read a lot of part of it, and 33% of people actually just skim through it. जो images होते हैं ना, images पे रुकते हैं और आगे आगे बढ़ जाते हैं, टेक्स्ट बिल्कुल नहीं पढ़ते. हेडिंग्स पढ़ेंगे, इमेज हेडिंग्स इमेजेस. And then there are 0% people who actually read the full case study. Unless you are a very fresh designer और तुमको इंस्पिरेशन लेना है किसी और के पोर्टफोलियो से, none other than this audience will actually read your case study, right? And that's exactly what hiring managers के लिए हमको हमारी पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना है. Now there are two ways of creating portfolio, right? One, you are trying to impress. यार ये बलून कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, इस ओके, हाँ. Now there are two ways to do it, right? One, you create your portfolio to impress junior designers. Second, you create your portfolio to impress startup founders. And third, you create your portfolio to impress hiring partners. They are their target audience, right? अब तुम ये जो फैंसी चीजें बनाते हैं ना पोर्टफोलियो पे, वो चीजें यहाँ वहां से घूम के आ रही है, मुजरा चल रहा है, यहाँ से एक सन आ रहा है, वहां से ये आ रहा है, फिर एक पेस्टेड ऐसा कुछ तो है. अमेजिंग वर्क. बट हायरिंग मैनेजर्स को वो मजा नहीं आता, वो डिजाइनर्स को मजा आता है, राइट? डिजाइनर्स जब तुम्हारा पोर्टफोलियो देखता है, उस पर यहाँ वहां बहुत सारी चीजें यहाँ वहां घूम रही फिर रही होती है, मजा आ जाता है उसको लगता है यार दिस इज द पोर्टफोलियो जो मुझे भी बनाना है. Now that's where the problem lies, right? Now when you are thinking of a portfolio, you need to mention who is your target. Is it a hiring manager? Is it a startup founder? Is it a junior designer? Based on that, आगे के सारे steps you will start applying, right? People who are dropping questions in the chat, मैं सबके questions answer करूंगा. Bhushan and Raj, if you are on the call, एक बार ये सारे questions note down कर लेना please, ताकि we are able to answer at the end. We will have last में like 10-15 minutes का proper Q&A session. So I'll make sure I complete it before 8:30. And let's move ahead. Yes, this is what the hiring manager is actually looking for. Can you understand a messy problem? Yes or no? Right? Because hiring manager को पता है कि उसके कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर उसके एजेंसी में क्या प्रॉब्लम चल रही है. मेरे को उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए एक डिजाइनर चाहिए. Can I find that answer on your portfolio? One. Second, can you make thoughtful design decisions? अब design decisions are made either subjectively or objectively. How much subjectiveness is there in your design and how much objectiveness is there in your design is very important, and that's where this line comes in. Thoughtful design decisions है या नहीं है, right? Can you explain why you choose one direction? Like for example, if you are making a design choice, why did you use a grid system? Why did you use a list? For example, अगर तुमको images present करने या blogs present करने हैं, blogs present करने के लिए तुमने grid क्यों choose किया? Why not a list? Medium पे list होता है, Medium पे तो grid नहीं है, तो Medium ने list क्यों choose किया होगा और तुमने grid क्यों choose किया? Can you give proper reasoning for their choice? That is something which is very important, and that is something you need to, the hiring manager needs to extract out of your portfolio. Can you work with users, teams, and constraints? Now, when you're writing a portfolio,
Now when you are writing our portfolio, the hiring manager actually also looks at कि तुमने टीम्स में काम किया है क्या, तुमने यूजर रिसर्च किया है क्या, तुमने बिजनेस वालों से बात करके उनसे उनके कंस्ट्रेंट समझे क्या। अब बिजनेस वाले आके तुमको ये तो नहीं बोलेंगे कि हरा को पर्पल कर दो, अगर वो बोल रहे हैं तो तुम गलत जगह पे काम कर रहे हो, उनको मुंह पे थप्पड़ मारो, निकलो वहां से। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, द थिंग इज कि कंस्ट्रेंट्स बिजनेस वाले देते ही देते हैं, राइट? And how do you make sure you have gone through the constraints and without actually overruling it, you have made your design decisions? That is the fourth point. Can you work with users, teams, and constraints? And finally, can you present impact without vague drama? अब impact में दो तरीके की चीजें होती हैं. One, you can show numbers. I gave 10% uplift in the onboarding flow. I gave 40% uplift in the uplift. क्या हो रहा है यार मेरे मुंह को आज? Uplift. हाँ. I gave 40% uplift on the payment screen, right? This is something which is very important. Now, people don't have numbers to show. What can you do in that case? Don't show numbers. Just show तुमने बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस किया. दिस इज जस्ट वन ऑफ इट. मैं तुमको ऐसी 9 चीजें बताऊंगा जो बिना नंबर्स के भी तुम्हारा पोर्टफोलियो इंपैक्टफुल बना सकती हैं. टेंटेड है. आगे आने वाला है, वो अभी नहीं आएगा. दिस इज द गोल. And the end of this session, you have to make sure your mindset changes from look at my UI to look at my design brain, right? Because all of us are designers और हमारा दिमाग अच्छा होता है, ठीक है? वो हमको प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो हमको फ्रेम करना आना चाहिए, वो हमको कॉन्फिडेंस में दिखाना आना चाहिए. That is the most important part, and that is what we will learn today. अब जब हम पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं, the first question that comes in our mind is, what should I exactly write, right? And that's when everything is blank. Now, I challenge you right now, just sit, close your eyes and think कि ये एक प्रोजेक्ट था, इसके बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, right? And you will be like, oh, I'm not able to think of anything, right? Because you don't have a set framework, you don't have a set sequence of what kind of questions you should be asking yourself, right? And that is the most crucial and the most important part in this whole thing. Now, I'll give you the exact questions that you should be asking. And end of that, you will have a list of things you can start building upon, right? And एक बहुत प्यारा सा framework है. Obviously, me being me, I will add Bollywood in everything. I have made a Bollywood framework, bro. आगे बढ़ते हैं. These are the questions that you need to ask yourself. Start with bullet evidence. Problem, goal, constraint, what changed, what was hard, what you learned. This is the sequence. तुमने problem क्या solve की? तुम्हारा गोल क्या था? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल्स, ठीक है? प्रॉब्लम, ऑनबोर्डिंग फ्लो में इतना ज्यादा ड्रॉप ऑफ्स हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, ऑनबोर्डिंग टू होम का कन्वर्जन वाज अराउंड 50% और 20% फॉर पीपल हु डोंट हैव नंबर्स. ऑनबोर्डिंग में देयर वर 10 स्क्रीन्स एंड पीपल वर ओनली गोइंग टिल 4th स्क्रीन. और ऑनबोर्डिंग में देयर वर 10 अननेसेसरी स्क्रीन्स. आई ड्रिल्ड इट डाउन टू 4 इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स. सिंपल. हमने नंबर भी डाल दिया, बिना नंबर के भी देख लिया. सेम चीज. गोल में क्या था? गोल में हमने क्या किया कि स्टेप्स को रिड्यूस किया, नंबर्स कैसे इंप्रूव किए, हमको कौन सा कन्वर्जन बढ़ाना था, पेमेंट बढ़ाना था या होम पेज पे लैंडिंग बढ़ाना था, XYZ. कंस्ट्रेंट्स, बिजनेस से तुमको कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, तुमको तुम्हारी लीगल टीम ने कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन करो. कंस्ट्रेंट्स में एक और चीज आती है कि यू कैन नॉट चेंज द डिजाइन सिस्टम ऑफ द ऐप. दैट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट एंड इट इज वेरी फेयर टू मेंशन दैट. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट व्हाट चेंज्ड, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू डिफरेंशिएटिंग. जैसे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला कि 10 स्क्रीन का ऑनबोर्डिंग था, उसको मैंने 4 कर दिया क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअली सेंस बनाना था यूजर के लिए. दैट इज व्हाट यू विल मेंशन इन व्हाट चेंज. व्हाट वाज हार्ड व्हेन यू वर फिगरिंग आउट दिस सॉल्यूशन? वाज देयर एनी पॉइंट वेयर यू फेल्ट दैट, oh, probably my solution is not fitting well here, can I think of more things? फॉर एग्जाम्पल, ऑनबोर्डिंग में एक ऐसी स्क्रीन थी जहां पे तुम ईमेल पूछ रहे थे यूजर से, और ईमेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिंग. बट तुमको ऐसा लगा कि यार ईमेल तो हम बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हारी टेक टीम ने आके बोला कि नहीं, ईमेल इज समथिंग जो हमको यूजर एट्रीब्यूशन में काम आता है, राइट? तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ा कि ईमेल को तुमको जबरदस्ती रखना ही पड़ गया. दैट इज व्हाट वेंट हार्ड में तुमको लिस्ट करना है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. एंड देन फाइनली, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोर्टफोलियो, दैट व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ इट, द वर्क दैट यू हैव डन इज नॉट समथिंग कि तुमने दूसरों की लाइफ चेंज कर दी. इट्स ऑल्सो अबाउट you understanding new things, you learning new things, and you adding a new skill in your list, right? That is something which you put in what you learned. So these are the 6 items that you need to ask questions when you sit together. Close your eyes and now start asking the question, and now start thinking of, let's write a case study. Now if you don't have idea of what to write, then वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं, मैंने तो बता दिया.
आगे बढ़ते हैं. See, once you have answers for all of this, we will write a story out of it. How many of you are good at storytelling? Can you please raise your hands? देखो, जो रेज हैंड कर रहा है ना, मैं माइक ऑन करवा के तुमसे सवाल पूछ लूंगा स्टोरी टेलिंग के, ठीक है? सोच समझ के रेज करना. हाँ, देखो देखो हाथ कैसे कम हो रहे हैं, देखो. डर गए, फट गई. Cool. That's, anyways, we will learn that today, right? 8 of you. Okay, 1 second. इनको एक के बाद एक उठाता हूँ. कहानी बताओ अब तुम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने बोला है कि तुमको स्टोरी बोलनी आती है. ठीक है, रुक जाओ. तुम्हारे नामों का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं Q&A में तुम लोगों को ना. रुको, मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा. मस्त ले लिया तुम्हारा स्क्रीनशॉट नाम का तुम्हारे. Okay, cool. Let's move ahead. Now, once you have these pointers, now I am not saying ki when you are thinking of all these pointers like the problem, goal, constraint, what changed, what was hard, what you learned, I am not saying ki yaar lambe paragraphs likho. Can you write keywords? Can you just write like 4 to 5 words? आए चैट जीपीटी जिंदाबाद. किसके लिए भाई? ये प्रॉब्लम के आंसर लिखने के लिए. नहीं रुको, अभी चैट जीपीटी पे आते हैं. रुको. हाँ, तो can you write 4 to 5 words on each of the points? That is enough. Believe me, that is enough. You don't need to write paragraphs at all. Because paragraph लिखने वाली चीजें आगे आने वाली है ना. बचोगे नहीं तुम. Now turn all of that into a story. Start with the bullet evidence, which is this. Give answers to all these pointers and now turn that into a story. How do you turn that into a story, right? Record yourself. Ask what problem did I solve? मतलब खुद से पूछो obviously. ये वीडियो में बोलना है तुमको, या फिर जस्ट हैव अ ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग, राइट? एंड आस्क समवन एल्स ऑफ व्हाट पॉइंट ऑफ द डिजाइन सरप्राइज देम. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग विद द फाउंडर, आस्क देम which of these screens actually made you feel like, okay, this is something interesting. If you don't have a founder who you are working with, if it's a mock project, ask your friends, ask your professors, teachers, or probably just ask it internally in your family, right? Ask it to your close friends. If you don't have friends, if you don't have professors, teachers, ask it to your family. If they are not around you, they are somewhere far, you are sitting alone in a hostel room, go out. Building में बहुत लोग होते हैं, जाके बात करो बेशर्मो, ठीक है? But find someone who can actually look at your design and actually give you some response. Correct? That is exactly when you go for you try to build a story and stitch a story. कितने लोगों ने धुरंधर देखी है by the way? सात घंटे की पिक्चर देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, है? बट एनीवेज, अच्छी बात है अगर तुमने धुरंधर देखी है. माय पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग दैट अप वाज द थिंग इज दैट यू नो एवरी सीन इन दैट पर्टिकुलर मूवी इज नॉट समथिंग जो एग्जैक्ट सीक्वेंस में हुआ, राइट? इट वाज अ स्टिचिंग ऑफ ऑल द रियल लाइफ इंसिडेंट्स सिक्वेंशियली शोन टू यू इन अ मैनर कि वो तुम्हारे दिमाग के पल्ले पड़े. Every part of it, हालांकि the incidents were exactly the same, but the sequence of it, naturally putting it in a story was a brilliant job, right? And that is exactly what storytelling is all about, right? Once you learn how to tell a story in such a manner कि audience को ऐसा लगे कि यार ये तो सच है. See, incidents are real, your design solutions are real, but how you stitch it, how sequentially you go from like starting off the story and then creating all that interest, showing all that impact, and then diving them into the background of that, and then finally giving a conclusion, that is something that you need to learn, right? And that is the most fun part that we are going to learn today. Because a strong case study does not make you look like the hero. अब इस पे मैं simple सी बात बोल रहा हूँ. When I say that you need to turn it into a story, a lot of you might be thinking कि यार हमको खुद को hero दिखाना पड़ेगा. Never do that. That is the worst thing you will do to your portfolio, and you should be aware that you should never be doing that. The thing is कि hero ना तुम हो ना problem है. The client is exactly the hero, right? Because see, if you show yourself as hero, it will look like boasting. It might look like probably there is not much about what solution you created, but there's a lot about you, right? And वो meme वाली जो चीज होती है ना, वो actually creates a lot of problem in actually writing the story.
how do you portray yourself in the story is something that is coming up. So just by heart this line. I'm telling you, a strong case study does not make you look like the hero. It makes the reader trust you as the guide. Who is the reader? The HR, the founder, or the person who are trying to pitch? And here there is a keyword which I am telling you, you should be that. And that is what? Guide, right? You are the guide, you are not the hero. The client is the hero, right? And problem क्या होता है? Problem वही होता है जो होता है. As I said, मैं तब से बोले जा रहा हूँ डिजाइन स्टोरी टेलिंग, डिजाइन स्टोरी टेलिंग. कितने लोगों ने डिजाइन स्टोरी टेलिंग बुक पढ़ी है? There is a book called Design Storytelling, a legit book. How many of you have actually read that book? किसी ने नहीं पढ़ी? What? हाय ओ एक जन ने पढ़ी है बस. ओके नाइस गुड. प्रिशा सिंह, शाउट आउट टू प्रिशा सिंह फॉर रीडिंग दैट बुक. 118 लोगों में उस एक लड़की ने ये किताब पढ़ी है. यूज किया उसको कभी? चैट में बताओ, चैट में यूज किया उसका लेसन्स? अब रिप्लाई नहीं आएगा. ओके बट यस, कैसे यूज करेंगे वही बताऊंगा मैं आज. बट एनीवेज गुड थिंग. ओके आगे बढ़ते हैं. As I said, you are not the hero. And that's where we move to the Tamasha framework. That is my favorite framework. कितने लोगों ने तमाशा मूवी देखी है? जितने लोगों ने देखी है चुपचाप हैंड रेस करो, क्योंकि ये मेरी फेवरेट मूवी है. अगर कोई मेरे को जज कर रहा है बिकॉज आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, देन प्लीज कीप जजिंग. मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है. कितने लोगों ने देखी है? अगर तुम लोगों ने नहीं देखी प्लीज जाके देखो. हाँ 2.5 घंटे की मूवी देखने के लिए है टाइम, पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे? ठीक है. बट एनीवेज दिस इज माय फेवरेट मूवी. आई वॉच दिस मूवी. आई डिड नॉट वेस्ट 2.5 hours. मेरे को बहुत प्यारी लगती है मूवी. एंड I mean, I relate to a lot of scenes in the movie, right? So I'll try to explain what the storytelling framework is and how you can start thinking in this framework, and how you can actually start writing things in this format, right? Simple thing. यहाँ पे तीनों है. यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लाइंट है, और यहाँ पे गाइड है. हु इज द क्लाइंट? द हीरो. अब इन तीनों में से हीरो कौन है? राइट, बिकॉज ही इज द क्लाइंट. क्लाइंट को हमेशा हीरो रखना है. हु इज दिस? दिस इज द डिजाइनर. ऑल ऑफ अस आर दिस गाय, this particular guy. And this is the problem that we are trying to solve for the client. What was the problem in Tamasha movie? A lot of you might know, but just to summarize, the problem was कि इस बंदे को स्टोरी टेलर बनना था, बट उसका बाप ने बोला कि कोई कॉर्पोरेट नौकरी कर ले. अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाप को जाके बोले कि पापा मेरे को ना कॉर्पोरेट में मजा नहीं आएगा, मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है. दैट्स द होल क्रक्स. अब मैंने स्पॉइलर दे दिया बहुत लोगों को बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट. समझे? देखा नहीं है जाके देखना आज रात को. हाफ आवर फॉर 10 रुपए. क्या है ये? हाफ आवर फॉर 10 रुपए क्या है ये? Oh, yes. That's a good reference. मैं ही भूल गया था यार. But yeah, anyways, very good reference. So the thing is, this guy right here is guiding the client to actually reach this goal. And this is exactly your portfolio should talk about, right? And how do you do that? How do you break it down? How do you pinpoint things that make sense to the reader? That is what we are going to talk about. Let's move ahead. As I said, the client is the hero. The story is about helping them get where they want to go, right? This guy right here wanted to go somewhere and he did not know how to go there. And that's where the designer came in, basically the guide, and he provided with the right strategy and the right tools to help the hero win. Correct? If you have watched the movie, you will relate with this. Already तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें बन चुकी होंगी. And then finally, the obstacle, business or user challenge that must be destroyed.
यूजर चैलेंज, उसके पापा जी, है ना? और सक्षम ने काफी प्यारी सी चीज बोली है, कौन है तू, चाहता क्या है तू, राइट? बिकॉज यू आस्क द क्लाइंट. Very beautiful reference, Saksham. Very beautiful reference. But yes, this is what exactly it is. This is exactly what everything is about. तुमने क्लाइंट को पूछा कि प्रॉब्लम्स बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा. That's exactly where this guy says, कौन है तू? चाहता क्या है तू? And then finally he gets a response and he gives an answer. Let's move ahead. Simple story structure. Now, this is where you guys need to pay the exact attention because ये सारा जो मैंने भंडियापा किया है यहाँ पे, ये तीनों चीजों जो लिखी हैं, अब इसको हम कैसे 7 से लेके 8 चीजों में ब्रेक डाउन करके चीजें लिखना शुरू कर सकते हैं, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. The first is the hero. Who is this project for? The client, basically. Let's say, for example, you're working for a client called Coca-Cola. Coca-Cola is the hero. The problem. What was stopping them, right? They want to reach somewhere. Probably they want to launch a product. Probably they want to optimize their onboarding. Probably they want to create a new landing page. What is stopping them to reach there, right? A designer like you, probably a very difficult onboarding funnel, this or that. And then finally, the stakes, which is the constraints. Basically, कंस्ट्रेंट डाल के, और ये क्यों चेंज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर ऑनबोर्डिंग फनल इंप्रूव हो गई तो बाय नेचुरली पेमेंट वाली स्क्रीन पे लैंड करने वाले यूजर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, राइट? सो पेमेंट इन विल चेंज, द पेमेंट का कन्वर्जन विल एक्चुअली गिव एन अपटेक, राइट? सो ऐसी सारी चीजें वो क्या हो सकती हैं. ऑनबोर्डिंग इंप्रूव करने से क्या चेंज हो जाएगा उनके बिजनेस में? पेमेंट स्क्रीन का कंफ्यूजन कम करने से क्या चेंज हो जाएगा उनके बिजनेस में? ये सारी चीजें हमको बोलना शुरू करनी पड़ जाती है, राइट? एक्सपीरियंस वाइज कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, ट्रस्ट वाइज कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, अडॉप्शन वाइज क्या चीजें हैं, बिजनेस वाइज क्या आउटकम चाहिए, ये सारी चीजें हमको इसमें मेंशन करनी होती है. अब इसमें हमको बड़ी सी गाथा नहीं लिखनी है, इसमें बस 2 लाइन लिखना होता है. वो 2 लाइन कैसे लिखना है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज एवरीवन कैन राइट 10 लाइन्स, nobody can summarize that into 2 lines. चैट जीपीटी जिंदाबाद. ह्यूमंस को तो नहीं आता था समराइज करना, चैट जीपीटी को बहुत अच्छे तरीके से आता है. तो लेट्स मूव अहेड. द गाइड, वेयर डू यू कम इन? सो यू सी द सीक्वेंस. मैंने अपने ब्रांड का टाइटल दे दिया, उनका प्रॉब्लम क्या था और ये क्यों चेंज करना था, एंड फाइनली आई केम इन एज अ गाइड, राइट? व्हाट डिड आई डू? डिड आई डू ओनली द यूआई, ओनली द यूएक्स, और डिड आई ऑल्सो डू यूजर रिसर्च, XYZ, अ लॉट ऑफ थिंग्स? व्हाट ऑल डिड आई डू? यहाँ पे हमको हमारे गाइड का प्रेजेंटेशन करना है. यू सी, हमारे बारे में 4th स्टेप पे आया था, क्योंकि हमको पहले कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी होती है. अब कोई एचआर तुम्हारे पेज पे जब आता है, उसको पहले कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है ना, कि यार इसने उखाड़ा क्या है, उसके बाद ही विल बी एबल टू जज कि तुमने इतना सारा जो गाथा लिखी है वो किस सेंस में मुझे पढ़नी चाहिए. सो वंस यू सेट द कॉन्टेक्स्ट, लास्ट वाले सेशन में मैंने फ्रेमिंग के बारे में सिखाया था. once you do the framing, anchoring and priming of things, people basically try to take your words, take your sentences, take your story in that particular box, right? तो उस बॉक्स में तुमको पहले यूजर को डालना होता है. आफ्टर दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग, सो दैट दे आर easily able to contextually relate with that. That is exactly why you need to do the first 3 things. आप हमने फ्रेमिंग, प्राइमिंग और एंकरिंग कर दी है. वो लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी है, देख लेना, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला. नाउ द जर्नी, दिस इज एग्जैक्टली वेरी शो द प्रोसेस. अब यहाँ पे ना बहुत लोग ये करते हैं, वो सीधा फाइनल स्क्रीन दिखा देते हैं. दिखाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट हैव अ सेक्शन समवेयर जहां पे तुमने सारे मेसी चीजें दिखाई हो, नॉट इन डिटेल बट एटलीस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ दैट. वायर फ्रेम्स हो गए, सारे आइटरेशंस हो गए. जैसे वो फाइल्स नहीं होते, वो डिजाइनर्स बोस्ट करते हैं कि यार ये देखो मैंने इतने सारे डिजाइन बनाए. कुछ नहीं हो, सब झूठ होता है. फाइनल स्क्रीन एक बनाते हैं, उसके बाद कुछ भी रैंडम ऐसे ऐसे करके वहां पे दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देते हैं. आधे से ज्यादा डिजाइनर्स झूठ दिखाते हैं. डोंट डू दैट. इफ यू डोंट हैव, डोंट शो इट. क्लियरली शो. डायरेक्ट हाई फिडिलिटी बनाया है. इफ यू शो लो फिडिलिटी आफ्टर मेकिंग द हाई फिडिलिटी, इट इज वेरी क्लियरली एविडेंट कि तुमने पहले हाई फाई बनाया, फिर तुमने लो फाई बनाया है. और बहुत लोग पोर्टफोलियो के लिए करते हैं, कभी मत करना है ये, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि whenever you started working, there was a journey. वहां पे ना बीच में हमको एक ना एक ऐसी चीज देनी होती है जिससे क्लाइमैक्स बनना शुरू हो जाए, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, हम एक रास्ते पे, लाइक देयर इज A to B, A से B एक रास्ते में हम जा रहे हैं गाड़ी पे, और बीच में एक पॉटहोल आ गया, राइट? अब उस पॉटहोल में जब गाड़ी गई तो उस गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ, हमको वो सारी चीजें जब हम यहाँ लिखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वो ईमेल वाला एग्जाम्पल दिया, राइट? कि
ईमेल वाला फ्लो तुम चाहते थे कि तुम निकाल दो, बट तुम्हारी टेक टीम ने बोला कि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूजर एट्रीब्यूशन, तो तुम ईमेल नहीं निकाल पाए। दैट इज द पॉट होल दैट यू फेस्ड। अब उसको तुमने कैसे टैकल किया, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। So the peak looks like this. I am reading your portfolio, I am reading your story, and then the pothole came, right? मेरा interest spike हो गया, and then how did you resolve the pothole का issue? Was where my interest actually started going up, right, in the trend. So ये मस्त एक ग्राफ बन जाता है. This is exactly where you get the pause. जैसे मैं बीच बीच में ये सब करता हूँ ना, that is exactly what you need to do in the portfolio. अब मैंने जो ये किया, तुम्हारा सबका attention मेरे पे आ गया. This is exactly जो तुमको portfolio में लिखना भी होता है, ठीक है? अच्छे से लिखो, बीच में कुछ इतना खराब सा दिखा दो कि उनका अटेंशन वापस आ जाए कि यार इतना सब अच्छा चल रहा था, ये क्या बकचोदी हो गई, और उसके बाद वापस इंटरेस्ट चालू हो गया. दैट इज द सीक्वेंस यू नीड टू क्रिएट, एंड दिस इज कॉल्ड स्टोरी, राइट? क्योंकि स्टोरी में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से होती है, देन एक स्मूथ स्टोरी चल रही होती है और अचानक से विलन बीच में आ जाता है, एंड देन फिर हीरो फिगर आउट करता है कि विलन को कैसे मारना है और हीरोइन को कैसे बचाना है, राइट? That is the whole interest, that is the whole point of story, and there always has to be a villain, there always has to be a nice little climax to the movie, right? And that's where you bring all of this in, and then finally you show the solution because you got a roadblocker. How did you solve that problem, right? And that is where the most interesting thing about your portfolio and your case study comes in. This is where you talk about, this is my solution, that is my solution, this is what I did, that is what they did, and this is where you show the numbers, right? And exactly summarize all of it. As a result, the experience became more clear. Simple, easy peasy, lemon squeezy. You are complicating it without any reason. देखा कितनी easily हम टक 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 करके आगे बढ़ गए, right? Super crazy. This is exactly what you need to make sure of. अब now that we are here, what improved? अब यहाँ पे हम बहुत सारे numbers दिखा सकते हैं, बहुत सारे research findings दिखा सकते हैं, testimonials, this, that, everything. But finally, you need to also show what did you learn out of it. Right? Because see, a lot of times you will have a lot of things to show, but every time you do a project, you actually have a new learning, because probably last time तुमको पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता था और वो फिनटेक में तो चल जाता है, बट शायद वो फूड डिलीवरी ऐप में नहीं चलता हो. दिस इज योर लर्निंग, राइट? I was working on a fintech app. I love purple. When I started working on a food delivery app, purple was something which was not resonating with people, and that is where I learned how color psychology impacts different categories. See how कितना ब्यूटीफुली हमने एक रिफ्लेक्शन पॉइंट आउट कर दिया है, राइट? एवरी पोर्टफोलियो केस स्टडी हैज वन सच लाइन एंड यू हैव टू फाइंड दैट लाइन, और ये इजीली मिल जाता है. यू जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस. आगे बढ़े. इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, बट एनीवेज मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो डोंट वरी, यू विल आल्सो हैव द रिकॉर्डिंग्स. बट अगर फिर भी लेना चाहते हो, तुमको ऐसा लग रहा है मेरे पे डाउट है, तो ले लो. मेरा नहीं, ओ स्क्रीन शेयर का नहीं लेना, मतलब ओके. आगे बढ़ते हैं. अब मैंने बोल तो दिया कि ये सब लिखना है, बट हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक एचआर बस 20 सेकंड स्पेंड करता है हमारे पूरे पोर्टफोलियो पे. अब ये सारी चीजें हम कैसे कवर करेंगे, राइट? एंड दैट इज वेयर वी क्लब दिस इनटू 4 थिंग्स. व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? लेट्स हैव अ लुक. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि मैंने बोला था कि 20 सेकंड ही लगते हैं बस एक एचआर को डिसाइड करने में वेदर आई वांट टू हायर यू और नॉट? ऑल ऑफ यू रिमेंबर? क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, वाइवा हो जाएगा तुम लोगों का, बता रहा हूं. जैसे क्वेश्चन पूछ लूंगा बोलता हूं, लोग हाथ नीचे करने लग जाते हैं, यार ये क्या फटी है. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑल ऑफ यू रिमेंबर मैंने बोला था अगर कोई एचआर तुम्हारा पोर्टफोलियो देख रहा है, दे ओनली स्पेंड 20 seconds on that, not more than that. But how do you present all of this in just 20 seconds? That is where the framework of the 4 things comes in, right? We have the hook, the problem, key outcomes and the solution. यहाँ पे मैंने राइट साइड में जो डब्बे बनाया ना, ये ऐसे ही नहीं बनाया मैंने, ठीक है? It's all related to what I'm trying to talk about. The hook basically is the image that you create, the first mock-up that you are creating. First mock-up with the perfect title that you are creating, right? वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा. And then finally a problem in just 1 or 2 sentences. Problems कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, पूरा पेज ही प्रॉब्लम का लिखते हैं, लास्ट में सोल्यूशन 2 लाइन में डाल देते हैं. ये नहीं करना होता, उल्टा करना होता है हमको प्रॉब्लम बस 2 लाइन में लिखनी है कि देखो भैया
ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही थी, पेमेंट नहीं कन्वर्ट हो रहा था, होम पेज की लैंडिंग नहीं हो रही थी, वो मैंने सॉल्व किया, खत्म, दैट्स ऑल। 2 लाइन में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दी, एचआर को क्लियर हो गया कि यार ओ हो ये 3 चीजें ये सॉल्व करने वाला है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ what you have done is you have told the HR that hey bro listen brother either you have told the HR that ये जो है तुमको इस तरीके से पढ़ना है, and that's when they start moving ahead, and that's exactly where you show the key outcomes. Now तुम लोग में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्रोसेस दिखाए बिना आउटकम कैसे दिखाऊं। द थिंग इज वो पूरा जो लाइन ऑफ थिंग्स होता है ना कि स्टोरी स्टार्ट, गोइंग स्मूथली, हाईजैक, गोइंग फॉरवर्ड, सोल्यूशन, इम्पैक्ट, इसको अगर तुम फ्लिप कर दो ना, द इंटरेस्ट विल बी इवन मोर देन एक्चुअली कीपिंग इट सिक्वेंशियल, राइट? अब तुमने क्या किया, तुमने हुक कर लिया, हुक करके तुमने दिखाया प्रॉब्लम और सीधा सीधा इंपैक्ट दिखा दिया कि दीज आर द चेंजेस आई ब्रॉट आफ्टर डूइंग व्हाट यू आर गोइंग टू सी नेक्स्ट, राइट? दीज आर द चेंजेस आई ब्रॉट। अब एचआर उसको देख के बोलेगा ओ वाओ, इनके वजह से इतना ज्यादा इंपैक्ट आया, देखो तो क्या प्रोसेस था। एंड नाउ दे जंप इनटू द प्रोसेस। नाउ इज व्हेन यू स्टार्ट शोइंग एवरीथिंग, राइट? यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि हमने ऐसे स्टार्ट किया, हमने ये यूजर रिसर्च किया, मैंने ये ब्रांड से बात की, मैंने उसकी अम्मा से बात की, मैंने उसके अब्बा से बात की, ये वो फलाना ढिमका, ये सब बातें करने लग जाते हो तुम, राइट? बट बिफोर दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन द फ्रूट दैट द एचआर वाज लुकिंग फॉर। अब पहली 3 चीजें पहले 20 सेकंड में आराम से एचआर के दिमाग में घुस चुकी हैं। दैट्स माय टॉय गाइस, बाय द वे। ये देखो, इसका ये भी निकलता है, इसमें ये रील भी डाल सकते हो तुम। अब अगर कोई एचआर ये सब 3 चीजें देखने के बाद भी अगर बोले कि नहीं समझ आ रहा, उसको ये बंदूक उसके सर पे रखना और एक प्लास्टिक की गोली आती है उसके दिमाग पे मार देना, वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट दे दो। राइट? सो सी, द फर्स्ट 3 थिंग्स इज समथिंग जो तुम आराम से पहले 20 सेकंड में दिखा सकते हो। आफ्टर दैट स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जितना लंबा बनाना है बनाओ, क्योंकि वो कोई भी एचआर नहीं पढ़ने वाला है। इट्स ओनली फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स हु आर प्राउड ऑफ यू, दैट्स ऑल। Because nobody is going to read that story unless you make it super interesting. But these are the 4 steps जिसमें तुमको कैटेगराइज करना होता है, और इससे तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना टू द पॉइंट हो जाता है ना कि पहले 20 सेकंड में सब सॉर्टेड है ब्रो एचआर के दिमाग में, और तुम हायर हो गए। हायर ब्रो, हायर। नाउ द थिंग इज, a lot of people might have question. कितने लोगों को ये सवाल है कि यार मेरे पास नंबर्स नहीं है, मैं क्या करूं? Raise your hands please. I'll wait. I know तुम जितने लोगों ने रेज किया है वो बहुत कम हो, I know सबके दिमाग में। चुपचाप रेज करो, नहीं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं, खुलेआम रेज करो। हाँ देखा, क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं बोला, सब रेज कर रहे हैं। वाह देखो तो, देख रहे हो विनोद? हाँ कैसे हाथ उठाया जा रहा है। रुक जाओ। भाई ये क्या हो जाता है यार अचानक इसको। एनीवेज, यस, व्हेन आई से रिप्लेस क्लेम्स विद प्रूफ, एक ना शो डोंट टेल वाला चीज होता है, राइट? तुमको ना चीजें दिखानी होती है, तुम बस बात करके चीजें नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैं स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूं कि पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है, और वो एग्जैक्टली हम कैसे टैकल करेंगे, बाय मेकिंग श्योर कि हमने पढ़ना कम और दिखाना ज्यादा रखा है। नाउ बहुत सारे पोर्टफोलियोज में ऐसी चीजें होती हैं, हेडिंग्स में ना बहुत इंपैक्टफुल चीजें लिख देते हैं और फिर पैराग्राफ देते हैं जो कोई, नोबडी केयर्स अबाउट दोस पैराग्राफ्स एंड नोबडी रीड्स देम, राइट? एंड दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट हैपेंस ऑन योर पोर्टफोलियो। एक हेडिंग इतना ज्यादा इंपैक्टफुल दे दो कि पूरा पोर्टफोलियो पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? सो फॉर एग्जांपल, यू शुड नेवर बी सेइंग दैट द रीडिजाइन इंप्रूव्ड यूजेबिलिटी। कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं? हाँ, पीपल आर रेजिंग दैट, इसीलिए जॉब नहीं मिल रही है। सो द थिंग इज, इफ यू आर सेइंग द रीडिजाइन इंप्रूव यूजेबिलिटी, नोबडी इज गिविंग यू जॉब, ठीक है?
ऑन द फेस नहीं मिल रही है तुमको जॉब, you should actually start saying user stop pausing at the pricing step after we clarified the comparison, right? हो सकता है प्राइसिंग पेज पे कंपैरिजन था, वो हमने थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया जिसकी वजह से लोग वहां आके और थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे और कंपैरिजन देखने लगे. एंड बिलीव मी गाइज, एनी एंड एवरी वेबसाइट, एनी एंड एवरी ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पे कंपैरिजन दिखता है, people are actually prone to buy more things from that than places where comparison is not shown. और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? अब ऐसा कोई केस तुम्हारे इसमें ये बस एक एग्जांपल है, राइट? अभी हर चीज में नहीं होता. अब ऐसा कोई केस तुम्हारे प्रोजेक्ट में बन रहा है क्या? येस और नो, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर ऑफ, और उसके हिसाब से तुमको चीजें लिखना शुरू करनी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यू शुड नेवर बी सेइंग द यूआई लुक्स मोर प्रीमियम. कितने लोगों के पोर्टफोलियो में मैंने देखा है हेडिंग में लिखा होता है आई मेड द यूआई लुक प्रीमियम. घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है भाई. प्रीमियम का डेफिनेशन किसी को नहीं पता. तुमको लग रहा है कि यूआई लुक प्रीमियम बोल दोगे अगर, तो तुम्हारे पास प्रीमियम वाले क्लाइंट आ जाएंगे? नहीं आएंगे. बहुत गुस्सा दिलाते हो तुम लोग. You should say this: we improved hierarchy, spacing, trust queues and reduced visual noise on the decision screen. अब बहुत सारी ऐसी स्क्रीन्स होती हैं डिजाइन में जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग होती है. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट स्क्रीन जहां पे हम यूजर से फोन नंबर मांग रहे हैं, द लास्ट स्क्रीन जहां पे हम यूजर से ये बोल रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, चूज करो. देन देयर इज वन स्क्रीन जहां पे हम यूजर से पेमेंट मांग रहे हैं. देयर आर स्क्रीन्स वेयर हम जहां पे हम यूजर से नोटिफिकेशन परमिशंस मांग रहे हैं. देयर आर स्क्रीन्स जहां पे हम यूजर से कॉन्टैक्ट परमिशन मांग रहे हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज आर डिसीजन स्क्रीन्स. अब इन डिसीजन स्क्रीन्स पे तुम कैसे ये मेक श्योर करते हो कि people who are coming there have enough clarity to give you that access, right? For example, अगर तुम contact permission मांगते हो, contact permission तुमको क्यों चाहिए, क्या करोगे, कहाँ जा रहा है, मेरा क्या फायदा है, तुम्हारा क्या फायदा है, ये सारी चीजें यूजर के दिमाग में आती ही आती हैं. कितने लोगों ने, टेल मी द ट्रूथ, कितने लोगों ने एप्स को कॉन्टैक्ट परमिशन ऐसे खुलेआम दे के रखी है बिना सवाल, बिना दिमाग में सवाल लाए? Very few of you. Let me tell you one thing, guys. तुम लोगों के वैसे डेटा कंपनी पैसे कमा रही है, ठीक है? अब तुम लोग सोचोगे ये कुछ अच्छी बात बोल के हमारी बेइज्जती कर देता है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. See, the point is, every time you see these screens, you actually think कि मैं क्यों दूं इनको परमिशन, मेरा क्या फायदा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं क्या, राइट? जैसे रेफरल स्क्रीन्स में बहुत होता है, बहुत सारे रेफरल फ्लोज में people actually tend to ask you contact permissions and you be like, why do I give my contact permission? And that's exactly where they show you, make it easy to refer, right? Calculate how much you can earn through your contacts. अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में अगर 100 लोग हैं, 100 लोग अगर एक पे तुमको 40 मिल रहा है, वो सीधा सीधा ऐप तुमको कैलकुलेशन दिखा देगा एंड यू विल बी मोर प्रोन टू एक्चुअली टेक एन एक्शन, एक्चुअली रेफर. अब यू एज अ डिजाइनर, योर जॉब इज टू मेक दिस वेरी कॉन्टेक्चुअली क्लियर, राइट? रेफरल्स में तुम कैसे ये यूजर को कन्वीनियंस दे सकते हो कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट परमिशन दो, बाय टेलिंग देम दैट हे गिव मी योर कॉन्टैक्ट परमिशन एंड लेट मी टेल यू हाउ मच टोटल यू विल अर्न थ्रू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, राइट? बिकॉज दैट्स अ फेयर कैलकुलेशन, राइट? अगर एक पे तुमको 10 मिल रहा है तो 100 कॉन्टैक्ट पे तुमको आराम से 1000 मिल जाएगा. ये कैलकुलेशन अगर तुम यूजर को दिखाने लगे, यूजर विल बी मोर प्रोन टू एक्चुअली गिव यू कॉन्टैक्ट परमिशंस, राइट? These kind of things is something that you will have to talk about in your portfolio, right? How did you make it clear to the user that, hey, give me the contact permission? This is something which you can show without showing numbers. As simple as that. The next thing is, अब इन दोनों में दो येलो कलर के लाइन दिख रहे होंगे, राइट? These are the key points that you need to mention. जब हम ऐसी चीजें लिखते हैं ना, like for example, the redesign improved usability की जगह जब हम लिखते हैं कि user stop pausing at the pricing step after we clarified the comparison. Pricing step in the first line will be very crucial because कौन से step, like for example, pricing in general is a very important thing for the whole business metric, right? And वहां पे जब हम ऐसे words use करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, इसने शायद revenue increase किया होगा, revenue से ये किया होगा, वो किया होगा, right? So all these things start happening. Second वाले में decision screens. Decision screens is a really good keyword because you clearly show them कि XYZ points on the app are actual very crucial decision points and I made the user actually convert there, right? So ये सारी चीजें तुम बहुत अच्छे से mention कर सकते हो. Now, in the show don't tell, अगला चीज is don't throw laws like a lawyer. I don't know if that person is here, but when I say what I'm going to say, that person will know that I'm talking about them. बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने पोर्टफोलियो में या केस स्टडी में ये मेंशन कर देते हैं कि हिक्स लॉ के हिसाब से
जेकब्स लॉ के हिसाब से, फिट्स लॉ के हिसाब से, कॉग्निटिव बायस के हिसाब से, ये वो फलाना ढिमका सब भर देंगे। एचआर को घंटा समझ में आता है हिक्स लॉ, एचआर को घंटा समझ में आता है फिट्स लॉ। बस तुमको आता है, और कुछ डिजाइनर जो दिन रात पिंटरेस्ट देखते हैं उनको समझ में आता है, एचआर को नहीं आता ये सब समझ में। वहां पे तुमको थोड़ा सा ना कंसिडरेट होना पड़ता है कि यार सब डिजाइनर नहीं होते। हायरिंग मैनेजर, शायद हायरिंग मैनेजर को बस कॉल लगाना और ईमेल पढ़ना आता होगा, उसको और कुछ आता नहीं है, राइट? उस केस में हमको क्या करना होता है? नेवर एवर से आई यूज्ड हिक्स लॉ एंड कॉग्निटिव लोड प्रिंसिपल्स। नो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? सवाल नहीं पूछूंगा, आई विल नॉट जज यू, प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं भी करता था ये, आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट in my dreams, not in reality. But yes, for all those who actually raise their hands, the thing is कि यार, as I said, law and all नहीं समझ में आती है लोगों को, so make sure you don't actually do this, right? There is an ex-HR in the chat. She is saying that ex-HR here agree. Obviously, नहीं आता होगा तुमको. अब, how do you actually this in a different way? How do you frame this in a different way? फ्रेमिंग, एंकरिंग, प्राइमिंग, लास्ट वीडियो जाकर देखना, ये सब सीख जाते तुम लोग। कंट्रोल, कंट्रोल राजन, कंट्रोल। हिक्स लॉ कैसे लिखना है देखो। I reduce the number of choices on the screen so users could make the next decision faster, right? हिक्स लॉ क्या कहता है? एक स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें मत दो जिससे यूजर को डिसीजन फटीग होने लगे। And that's why you need to either give a pre-selected choice or give them a very contextual choice. That is what Hicks law says. उस लॉ को तुमने अप्लाई करके क्या चेंज किया और उससे क्या इंपैक्ट आया, दैट इज व्हाट समवन इज बॉदर्ड अबाउट, नॉट अबाउट व्हाट लॉ यू आर एक्चुअली यूजिंग। ये सारे टेक्स्ट बुक लॉजिक अपने जेब में रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आई अप्लाइड फिट्स लॉ। किसी को समझ नहीं आ रहा, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता फिट्स लॉ से। हाउ डू यू राइट दैट? आई मेड द प्राइमरी एक्शन इजियर टू रीच एंड हार्डर टू मिस। अब इसमें वो थंब एरिया वाली चीज हो गई, बटन की हायरार्की वाली चीज हो गई कि मैंने बटन को प्रोमिनेंट कर दिया तो यूजर को पता था कि इस पे क्लिक करना है। अब मैंने पूरे स्क्रीन से 10 बटन हटा के एक बटन कर दिया तो यूजर आगे बढ़ने लगा। तो ये सारी चीजें तुम कैसे लिखोगे? कहीं भी फिट्स लॉ, हिक्स लॉ ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई यूज जेकब्स लॉ। कितने लोगों को जेकब्स लॉ पता है? बहुत कम लोगों को पता है, बट यस, सी, आई केप्ट द इंटरेक्शन फेमिलियर सो यूजर्स डिडंट हैव टू रीलर्न बेसिक बिहेवियर। एज सिंपल एज दैट। जेकब्स लॉ क्या बोलता है कि एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल यूज करके जो भी तुम कर सकते हो वो करो, rather than making them learn a new pattern, right? जैसे टिकटॉक ने फॉर एग्जांपल ये वाला जो इंटरेक्शन है वो इंट्रोड्यूस किया, रील ने वो एग्जैक्टली उठा के चेप लिया अपने ऐप में, बिल्कुल चेंज नहीं किया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली यूज्ड टू व्हाट टिकटॉक वाज डूइंग। अब रील ने बोला कि यार सब लोग सीख चुके हैं, इसी पे बिल्डअप कर लेते हैं, जय माता दी, लेट्स रॉक, है। एंड दे बेसिकली अडॉप्टेड दैट। दैट्स एग्जैक्टली वेयर इंस्टाग्राम अप्लाइड जेकब्स लॉ टू कॉपी टिकटॉक, राइट? The next thing is I reduced cognitive load. Cognitive load as a word is abused by people. Abused, believe me, लोग abuse करते हैं इस शब्द को, इतना बार यूज करते हैं, कुछ मीनिंग के बारे में पता नहीं है। तुमको पता है वहां ना वो बटन नहीं होना चाहिए, कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा। कुछ लोड नहीं बढ़ता है, तुम्हारा दिमाग में जो कचरा भरा पड़ा है ना वो भर रहा है, ठीक है? इससे बढ़िया है आई रिमूव्ड कंपीटिंग एक्शन सो यूजर कुड फोकस ऑन वन क्लियर नेक्स्ट स्टेप, एज सिंपल एज दैट, राइट? Cognitive load exactly होता क्या है? If you give a lot of things to pay attention to at the same time, user will get confused. अब हर चीज से अटेंशन हटा के एक चीज पे ला दो, तुमको हायरार्की इंप्रूव करनी है, उसकी विजुअल हायरार्की अगर तुम इंप्रूव कर दो, कॉग्निटिव लोड कम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। हर चीज में कॉग्निटिव लोड शब्द घुसेड़ना जरूरी नहीं होता है, and that's where you have to talk in a manner where you know how what the explanation of the thing is rather than what the thing is, right? इस लॉ का बोल के दिखाएगा कोई? क्या क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट, 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 गेस्टाल्ट।
जेस्टाल्ट, जेस्टाल्ट बोलते हैं इसको, मुझे पता था, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था तुम लोगों को। बट एनीवेज, सी द थिंग इज a lot of you might not even know कि इसको बोला कैसे जाता है, बट फिर भी तुम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ये डाल के रखा होगा जस्ट बिकॉज यू नो द मीनिंग ऑफ इट। और ये एक ना सिंपल सा लॉ है कि सिमिलर दिखने वाली चीजों को एक साथ ग्रुप करके रखो। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम पेटीएम ओपन करोगे फॉर दैट मैटर, या फोन पे ओपन करोगे, देयर आर सेक्शंस, recommended for you, money, banking, ये वो, and then there are elements in center of that. All that is basically how you apply this principle in action, right? वो तुमको बताना होता है कि I grouped related information together so users could understand the screen faster, because grouping in general makes it easy to consume, right? And indirectly it also improves the cognitive load because you exactly know where to scan and where to stop, correct? And that, और इसको इस तरीके से बोला जाता है। अब मैं धड़ाधड़ सारे लॉज का डेफिनेशंस तुमको बता रहा हूँ, पता नहीं तुम में से कितने को याद रहेगा ये, याद रखना प्लीज। I used progressive disclosure. Again, a very, 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 very abused word. Progressive disclosure. किसी को घंटा समझ में नहीं आता इसका फर्क, बट फिर भी ऐसे पढ़ करके पोर्टफोलियो में डाल देते हैं, और एचआर बोलता है ये क्या होता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। By the way, progressive disclosure is something जो तुमको अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स में अप्लाई करनी होती है, right? And this is where you actually bring in the climax and whole story वाला thing, because you are going smoothly, ये obstacle comes and then a climax appears and then finally this happens. Progressive disclosure is exactly the same thing applied on the whole storytelling framework. You should actually say, I showed users only what they needed at that moment and revealed details only when they became relevant. For example, अगर तुम्हारे पूरे ऑनबोर्डिंग जर्नी में तुमको कहीं भी नोटिफिकेशन परमिशन की जरूरत नहीं है, why are you ask it when you actually need notification permissions. Ask contact permission when you actually have an action for the user. Ask about what और कौन से परमिशंस होते हैं? Ask about location permissions when you actually want to show something. Like Zomato अगर तुमको फोन नंबर वाली स्क्रीन पे ही लोकेशन परमिशन मांगने लगे, तुम नहीं दोगे ना, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया तुमको। जब तुम होम पेज पे जाते हो तब जोमेटो कहता है देखो भैया लोकेशन दे दो, हम तुमको होटल दिखाएंगे, राइट? दे शो यू अ फ्रूट एंड देन बी लाइक नाउ गिव द लोकेशन एक्सेस। ये सारा होता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। ये जब तुम डिजाइन में अप्लाई करते हो तुमको ये चीज बतानी होती है केस स्टडी में। किसी को फर्क नहीं पड़ता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर एज अ वर्ड, उनको फर्क पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या है ये, कैसे अप्लाई हुआ, कौन सी स्क्रीन पे अप्लाई हुआ, कौन से सेक्शन में अप्लाई हुआ। भाई एक सांस में बोल दिया मैंने, क्या Now, Gabbar is back and he says that makes sense because hiring managers don't care कि तुमने लॉ का नाम याद रखा या नहीं रखा, they care whether you know how to apply it. पिछले हर लॉ के एंड में मैंने ये चीज बोली है, कैसे अप्लाई किया is the most important part, then do you know the name of the law, as simple as that. कॉलेजेस में तुमको बोला गया होगा कि ये डालो पोर्टफोलियो में, you will sound knowledgeable. किसी ने, I think exact words किसी ने चैट में भी बोला, राइट? मैंने अभी देखा। द थिंग इज कि यार देखो, केस स्टडी में जब तुम लिखने जाते हो ना, उसके बीच में लिखना जरूरी नहीं है। कोई, मैं जैसे बोला घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। कॉलेजेस आज भी 1990s में जी रहे हैं, दैट्स व्हाई दे गिव यू दीस काइंड ऑफ सजेशंस। प्लीज इग्नोर दैट सजेशंस। इफ यू वांट टू अप्लाई दैट, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि वो दिखाना है तुमको, क्योंकि तुमको थोड़ा नॉलेजेबल दिखना है, डू वन थिंग, अप्लाई दीज, राइट? राइट दिस लाइन एंड इस चीज को ना अपने पोर्टफोलियो पे अंडरलाइन कर दो। व्हेन समवन ट्राइज टू क्लिक ऑन दैट और हवर ऑन दैट, देन शो कि दिस इज प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। राइट दिस, आई ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर सो यूजर्स कुड अंडरस्टैंड द स्क्रीन फास्टर। और अंडरस्टैंड द स्क्रीन फास्टर को ऐसे अंडरलाइन कर दो, किसी ने उस पर माउस हवर किया, उसके बाद उसको प्रिंसिपल का नाम दिखा दो। अपफ्रंट प्रिंसिपल का नाम देना डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, राइट? अंडरलाइन करके उसको यूज करने दो उसको। अगर किसी को जानना है जान ले, तुम नॉलेजेबल भी दिख जाओगे और एट द सेम टाइम तुम्हारे पोर्टफोलियो का स्टोरी भी ब्रेक नहीं होगा, राइट? नाउ कमिंग टू द पार्ट जिसके लिए मोस्ट ऑफ यू आर हियर, व्हाट इफ आई डोंट हैव नंबर्स, आई डोंट नो व्हाट आर टू शो। नंबर्स का मतलब ये होता है कि ऑनबोर्डिंग फनल अगर 40% पे चल रहा है, कैसे तुम उसको 50% पे लेके गए। बट एट द फर्स्ट प्लेस, इफ यू डोंट नो दैट 40% वाज द कन्वर्जन एंड यू ब्रॉट इट टू 50%, ये परसेंटेज वाला गेम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या दिखाओगे? I will give you a lot of things to show, regardless of numbers. Let you go ahead, right? Let's go. एक मेन्यू कार्ड दे रहा हूं तुमको, सटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे ही सारी चीजें आ जाएंगी। बट आई विल जस्ट स्किम थ्रू इट, फुट करके स्किम थ्रू इट कर दूंगा, बिकॉज बहुत इजी चीज है, तुम शब्दों से समझ जाओगे। लेट्स गो विद द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम इज द बिफोर एंड आफ्टर। पहले ये डिजाइन कैसा दिखता था?
अब ये डिजाइन कैसा दिखता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, अब मैं क्या दिखाऊं? बिफोर आफ्टर दिखाओ ही मत, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट पहले एग्जिस्ट करता था एंड इट वाज अ रीडिजाइन, शो बिफोर आफ्टर। इफ इट डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, show competitors and show you, right? You got one point, what you can show. Next, user quotes. जब तुम एक डिजाइन बनाते हो, try to show it to users. Users ने क्या बोला? Users ने नेगेटिव बोला या पॉजिटिव बोला? Try to write that as items, right? Usability notes. When people were using it, what kind of problems they were facing? Were they able to find the button easily? Were they able to slide through it easily? Were they showing any trust issues on the phone number screen? Were you able to solve the trust issues? Yes or no? ये सारी चीजें तुम वहां पे बोल सकते हो। हर आइटम के नीचे मैंने एक छोटी छोटी लाइन लिखी है, वो रट्टा मार लेना कि बिफोर आफ्टर में शो विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन, यूजर कोड्स में शो हाउ पीपल रिएक्टेड व्हेन दे वर यूजिंग इट, यूजेबिलिटी नोट्स में एक्चुअली शो व्हाई यूजर पॉज, जैसे मैंने अभी बोला कि वर यू एबल टू क्लैरिफाई देयर assumptions of should I trust it or not. नेक्स्ट, फ्लो रिडक्शन। जैसे मैं बोले जा रहा हूं कि 10 स्क्रीन को मैंने 4 स्क्रीन बना दिया। इफ यू हैव जेन्युइनली डन दिस, बिलीव मी, दिस इज मोर इंपैक्टफुल देन एक्चुअली शोइंग कि 40% और 60% का अपटेक था। अगर तुमने फ्लो रिडक्शन किया है, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग द फाउंडर और द एचआर विल बी बॉदर्ड अबाउट, राइट? गाइज एक सेकेंड देना, गेस्ट रूम में लोग हैं क्या waiting to be, can you please admit them all? Okay, yes. So flow reduction, this is something that you can show like a, यहाँ पे तुम हीरो बन जाओ, ठीक है, फ्लो रिडक्शन में, बट क्योंकि ये है वैसी चीज। देन कम्स डिसीजन रैशनल। अब जैसे मैं ये नोटिफिकेशन परमिशन एंड ऑल वाली चीजें बोल रहा हूँ, वो सारी चीजों में तुमने कैसे सॉल्व किया? बिकॉज बिफोर ऑन द स्क्रीन तुम सीधा सीधा नोटिफिकेशन परमिशन मांगते थे, आफ्टर ऑन द स्क्रीन तुमने कॉन्टेक्स्ट दिया एंड देन फाइनली यू ट्राई टू आस्क फॉर परमिशंस। अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा काम करेगा और वो डिसीजन तुमने क्यों लिया? फॉर एग्जांपल, खाली स्क्रीन में देयर वाज नो कॉन्टेक्स्ट दैट वाज क्लियर टू द यूजर। द यूजर हैड क्वेश्चंस इन देयर माइंड दैट व्हाई शुड आई गिव माय कॉन्टैक्ट परमिशन, इज इट सेफ, व्हाट विल आई गेन आउट ऑफ इट? ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला चीज बनाया, बिकॉज दिस वाज गिविंग द यूजर अ क्लैरिफिकेशन ऑन वेयर देयर डेटा इज, हाउ विल दिस बी यूजफुल, हाउ विल दे अर्न आउट ऑफ इट, राइट? सो कौन सा डायरेक्शन एक्चुअली अच्छा था, कौन सा डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू इज बेटर, वो तुमको वहां दिखाना चाहिए। द ए एंड बी ऑफ थिंग्स, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। नेक्स्ट, ट्रेड ऑफ्स। जैसे इसके पहले मेंशन किया था, जैसे टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हो गए, बिजनेस कंस्ट्रेंट्स हो गए, जिसकी वजह से तुमको कुछ डिसीजंस कैंसिल करने पड़े। ये सारी चीजें तुमको बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पे मेंशन करनी होती है, और ये हर प्रोजेक्ट में होता है। देयर इज नो प्रोजेक्ट जहां पे तुमको ट्रेड ऑफ्स नहीं मिले होंगे। पैसों का ट्रेड हो सकता है, पैसों का कंस्ट्रेंट हो, कभी कभी हो सकता है कि टेक्निकल कंस्ट्रेंट हो, कभी कभी हो सकता है टाइम कंस्ट्रेंट हो, कभी कभी हो सकता है क्लाइंट फीडबैक कंस्ट्रेंट हो। तो ये सारे कंस्ट्रेंट जब तुम मेंशन करते हो, वहां पे इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू होता है, राइट? बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप अगर बहुत स्मूथली चल रहा होता है, वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। ओके, एनीवेज, there has to be some ups and downs, right? Handoff quality. Whenever you are trying to make the handoffs, whenever you are trying to create the final files, was it developer friendly? Was it new designer friendly? Was it founder friendly? Were they able to easily skim through the project? Were they able to easily go through everything? That is something that you can show here, right? Launch readiness, dev ready वाला जो structure बोल रहा हूँ, exactly वो। एंड देन फाइनली डिजाइन सिस्टम्स। अब हो सकता है तुमने प्रोजेक्ट के डिजाइन सिस्टम पे काम नहीं किया हो, बट तुमने डिजाइन सिस्टम रीयूज किया हो। तुम ये बहुत प्राउडली मेंशन कर सकते हो कि दे हैड अ एग्जिस्टिंग डिजाइन सिस्टम, आई रीयूज्ड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट टू सेव ऑन टाइम। और इफ यू हैव क्रिएटेड द डिजाइन सिस्टम, आई क्रिएटेड द डिजाइन सिस्टम, सो द डिजाइन प्रोसेस कैन बी 30% फास्टर, 40% फास्टर, 50% फास्टर। अब यहाँ पे तुमने नंबर क्लाइंट से नहीं लिया है, यहाँ पे एक नंबर तुमने अपना खुद का बना लिया, बिकॉज एक टेक्स्ट फील्ड बनाने में तुमको लेट से 10 मिनट लगते थे सारे केसेस बनाने में। एक बार तुमने उसको कंपोनेंट बनाया, उसके बाद से उसको रीयूज करना इज लाइक अ 3 सेकंड जॉब। हाउ मच टाइम यू हैव सेव्ड? अगर तुमको 10 इनपुट फील्ड बनाने थे, 10 इनपुट फील्ड पर इनपुट फील्ड लेट्स से 2 मिनट्स, व्हिच मींस अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स इन क्रिएटिंग 10 इनपुट फील्ड्स। तुमने एक बनाया, उसको रीयूज किया, 3 सेकंड्स पर इनपुट फील्ड, बाकी 9 जो है 3 सेकंड में बने। मैथ्स 27 सेकंड्स में तुमने 10 इनपुट फील्ड्स बना लिए। दैट्स अ विन। You went from 60 minutes to 27 seconds. This is a number that you can boast, right?
That is how you talk about design systems. I made a design system. There was color, there was typography, there was this, there was that component. इस ऐसे बात नहीं करते हैं डिजाइन सिस्टम में, राइट? हम हमेशा डिजाइन सिस्टम को टाइम पे क्वांटिफाई करते हैं, नॉट जस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ थिंग्स. बाय द वे, हैंड ऑफ क्वालिटी में मैंने एक चीज मिस कर दी, विच आर द एज केसेस, राइट? हैंड ऑफ क्वालिटी में एज केस, फॉर एग्जांपल टाइप इनपुट फील्ड के एज केसेस हो गए. फॉर एग्जांपल स्क्रीन एम्प्टी स्टेट्स, जैसे अगर लॉगिन में तुमने गलत ओटीपी डाल दिया तो क्या स्क्रीन दिखाएंगे? अगर फोन में नेटवर्क नहीं है तो क्या स्क्रीन दिखाएंगे? अगर तुम्हारा सर्वर मेंटेनेंस चल रहा है तो क्या स्क्रीन दिखाएंगे? ये सारी चीजें तुमको हैंड ऑफ क्वालिटी में होती है. तो अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है दिखाने के लिए, तो हैंड ऑफ क्वालिटी में तुम ये सारे एज केसेस ऐसे नाइसली प्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज समथिंग विच इज वेरी फ्रूटफुल और बहुत लोगों को मजा आ जाता है वो देख के. लेट्स मूव अहेड. अब मैं तुमको सिंपल से इफ एंड देन मैट्रिक्स दूंगा. 8 पॉइंट्स है, अच्छे से रट्टा मार लेना, बिकॉज इसके बाद तुम्हारी लाइफ एकदम बदल सी जाने वाली है, राइट? ये सक्षम एज केसेस जिंदाबाद, ठीक है? अगर एज केसेस नहीं बनाओगे तो तुम जज किए जाओगे. ओके, लेट्स मूव अहेड. इफ देन ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि तुम्हारे पास अगर ये वाला नंबर नहीं है तो तुम इसके बजाय क्या रिप्लेसमेंट दिखा सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इफ यू डोंट हैव द कन्वर्जन डेटा, विच इज, जो मैं अभी तक 15,000 बार बोल चुका हूं, ऑनबोर्डिंग 40 to 50 वाला. What you can do is show before and after hierarchy, CTA clarity, fewer discussion points, right? Decision points. अब इसमें हमने वो जो फिट्स लॉ एंड ऑल वाली चीजें, उसमें जो स्टेटमेंट्स थे वो अप्लाई करके बहुत ही एक प्यारी सी चीज बना दी है, जहां पे हम क्लियरली डिफाइन कर देंगे सामने वाले व्यूअर के लिए कि what exactly changed. Because I don't have the conversion data, but I can tell you that this improvement will actually give this kind of impact. That is a very important point which you can actually mention. Now, if you don't have retention data क्या होता है? कितने लोगों को पता है रिटेंशन क्या होता है प्रोडक्ट डिजाइन में? रेज योर हैंड. ओके, ठीक है, not a lot of you, but so retention is basically if a user is coming on your app and how long the user is staying on your app and is he coming back to your app on daily basis. For example, Zomato पे अगर तुम रोज ऑर्डर करते हो और तुम डे 2, डे 3, डे 4, अगर वीक में तुम 7 दिन ऑर्डर करते हो Zomato पे, तो 7 days is your retention, right? So डे 1 पे मैं आया, डे 2 पे मैं आया कि नहीं, 3 पे आया कि नहीं, 4 पे आया कि नहीं, इसका जो नंबर होता है इसको कहता है रिटेंशन डेटा. अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन शो कि वो रिटेंशन जैसा लगे, what kind of loops that you created. For example, habit building apps में if you don't know कि how many people are coming back, you can show them how did you make a design that would make people come back, which is called return loops. For example, Zomato के लिए it is ordering food. Habit forming apps के लिए come on the app and mark a habit as done. That is a returning loop, right? User comes on the app, he marks it as done, closes the app. Next he will again come on the app, he will mark it as done, close the app, right? These kind of things happen. Now these kind of things are something that you can clearly mention, और वो exactly retention data का replacement होता है, right? Saved states, for example, Instagram पे we have bookmarks and saves. That is something जिससे लोग retain होते हैं और वो वापस आते हैं ऐप पे, right? Progress, as I said, habit building ऐप में होता है. Reminders, personalization, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम retention के बजाय दिखा सकते हैं. So अगर conversion ना हो तो clarity दिखाओ, retention ना हो तो loops दिखाओ, right? Let's move ahead. If you don't have usability matrix, what is usability matrix, right? How much time does a user take to go from one screen to other? Are they going there or not? If you have 10 steps, are people reaching till the 10 steps? If they are not reaching, why they are not reaching? ये सारी चीजें usability matrix में आती हैं कि XYZ की 10,000 में से 5,000 यूजर्स 10वें स्क्रीन पे गए, 2,000 यूजर दूसरे स्क्रीन पे रुक गए. अब ये नंबर अगर तुम्हारे पास नहीं है, देन जो बिफोर आफ्टर वाले स्क्रीन है, बिफोर वाले स्क्रीन में यू कैन क्लियरली शो कि हियर आई अज्यूम दैट दिस इज व्हाई पीपल वुड नॉट मूव अहेड इन द जर्नी, एंड हियर बेस्ड ऑन माय अजम्पशंस दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सो दैट पीपल मूव अहेड इन द जर्नी, राइट? अब तुम्हारे पास यूजिबिलिटी मैट्रिक्स नहीं है, देन तुम अपने अजम्पशंस क्रिएट करके वो अजम्पशन सॉल्व जब करोगे, then it will make sense that okay, this is something related to usability matrix, let me talk about it, right?
सो दीज आर द थिंग्स. अब एक पेज पे अगर बहुत सारे एक्शंस हैं और उस एक्शन में से एक कोई ऐसा एक्शन था जो यूजर को दिख ही नहीं रहा था और यूजर रिसर्च में तुमको पता चला कि यूजर ने बोला कि ये बटन कहाँ है, मुझे तो दिखा ही नहीं. एंड देन यू रियलाइज कि यार ये बटन तो मैंने डाला था लेकिन यूजर को नहीं दिखा, विच मींस इट्स अ यूजेबिलिटी इशू. अगली बार जब तुमने वो चीजें चेंज करके यूजर को दी, कितने लोगों ने उसको नोटिस किया और उस पर क्लिक किया, इज समथिंग दैट यू कैन मेजर. इफ यू डोंट हैव नंबर्स टू मेजर दैट, क्लियरली शो कि यहाँ पे आई अज्यूम दिस बटन वाज नॉट क्लियर इनफ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लिक नहीं आ रहे थे. And this is a very crucial action for the user. How do we make it prominent? This is how I made it prominent. As simple as that. This is one of the points which is very important, right? Now, a lot of products have customer support, right? और बहुत सारे लोग हैं ना इतने impatient होते हैं, छोटे से छोटे प्रॉब्लम को लेके सीधा कस्टमर सपोर्ट को मैसेज कर देते हैं, राइट? एंड इस जर्नी को अगर तुम ऑप्टिमाइज कर दो, दिस इज समथिंग विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ लॉट ऑफ brands right now, क्योंकि people are impatient and they just want to talk to the customer support that hey give me the solution. Zomato पे अगर तुम और तुम्हारा खाना आता नहीं है और तुम भूखे पड़े हो, तुम सीधा कस्टमर सपोर्ट पे जाते हो, तुम डिलीवरी गाय को कॉल करके ये नहीं पूछते हो कि भैया कहाँ रह गए, तुम सीधा कस्टमर सपोर्ट के पास जाओगे, बोलोगे भैया देखो उससे बात कराओ नहीं तो तुम्हारा उथल पुथल करके कपार फोड़ देंगे हम. करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ, करते हो तो. मैं तो करता हूँ. मैं डिलीवरी गाय को फोन ही नहीं करता, मैं सीधा कस्टमर केयर को मैसेज करता हूँ. Yes, obviously सब लोग करते हैं because by default we have become so impatient कि ये मैट्रिक्स सॉल्व करना is very important. Now let's say जो तुम्हारा कस्टमर सपोर्ट रीच आउट का बटन है, अगर उस पर क्लिक करने के बाद तुम एक छोटा सा बॉटम शीट दिखा दो जिसमें लिखा है कि भैया देखो ऐसा है, ऑर्डर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, इसमें से ये चीजें आप ऑप्टिमाइज कर लो. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई ऑर्डर, सेकेंड, वॉज माई ऑर्डर कुक्ड और नॉट, थर्ड, कितना टाइम लग सकता है मेरे ऑर्डर को आने में. ये 3 क्वेश्चन आर द बेसिक क्वेश्चन. Every time the user is trying to reach out to a customer support, they always have a basic question ready in their mind. Are you able to solve it before even they reach the customer support screen? If yes, तुम्हारे customer support tickets कम हो जाएंगे, and that is a very 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 positive metric for a brand to actually target. तो अगर तुम्हारे पास support ticket का data नहीं है, तुम directly ये बोल दो कि I assume that users are not patient and that's why they might be going to the customer support screen immediately. I added a contextual bottom sheet where I clarify the questions early so that the number of people who actually go to customer support reduces in number, and in return the business is able to handle more customers at the same time, because customer support executives बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, राइट? बहुत कम होते हैं. तो एक ये बिजनेस मेट्रिक होता है, क्योंकि वहां पे होता प्रॉब्लम ये है ना कि 10 लोग हैं कस्टमर सपोर्ट में और 2000 यूजर अगर आ गए, यू सी द रेशियो ऑफ 200:1 हो जाता है, राइट? इफ यू थ्रू प्रोडक्ट डिजाइन यू रिड्यूस दैट नंबर, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज होती है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन बोस्ट अबाउट, दैट इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट. नाउ आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे, राइट? अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन डेटा नहीं है, रिटेंशन डेटा नहीं है, यूजिबिलिटी नहीं है, सपोर्ट टिकट का डेटा नहीं है, तो हम क्या दिखा सकते हैं. बट व्हाट इफ देयर वर टीम कंस्ट्रेंट्स, व्हाट इफ देयर वर मोर थिंग्स लाइक दैट? लेट्स टॉक अबाउट दैट. इफ इट हैज नॉट लॉन्च्ड, अ लॉट ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम कि यार मैंने डिजाइन किया बट वो लॉन्च ही नहीं हुआ है अभी तक, हाउ डू आई शो दिस? है कि नहीं है? है ना प्रॉब्लम? है ना? सच है ना? माहिती आहे मला प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला. But anyways, see, this is a problem and this is a genuine problem जो बहुत सारे लोगों को होती है. Guys, मेरे को बता देना अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो, मैंने माइक लगाया हुआ है. I guess हाँ मेरी आवाज आ रही होगी. Okay, so I am saying कि यार ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है in general. And अब सेकंड कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये आ जाता है कि यार NDA होता है कि मत दिखाओ ये वो, देन उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. बट एंड उस केस में एटलीस्ट हमको उस लॉन्च का वेट करना पड़ेगा. बट इफ यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम एंड यू कैन शो दिस. अब ये मॉक प्रोजेक्ट में भी होता है. मॉक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कभी भी लॉन्च नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या दिखा सकते हैं? शो लॉन्च रेडी फ्लोज. जो यूजर के हाथ में जाने वाले जो स्क्रीन्स हैं वो तुम कैसे दिखा सकते हो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्सिव स्टेट्स, अगर तुम वेबसाइट बना रहे हो तो टैब व्यू, मोबाइल व्यू, अगर तुम ये दिखा दोगे तो ये ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज लॉन्च रेडी थिंग, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. एज केसेस एंड क्यूए नोट्स. क्यूए क्या होता है कि इस स्क्रीन पे हमको क्या मेक श्योर करना है. I don't know if all of you know what a QA process is. QA process is basically एक डिजाइनर जब डिजाइन बनाता है और टेक टीम को देता है, टेक टीम उसको इंप्लीमेंट करती है, तब एक QA टीम होती है जो वो वेरीफाई करती है कि
ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जैक्टली फिग्मा के जैसा है या नहीं है, राइट? दैट इज समथिंग दैट द क्यूए टीम डज. अब इसमें हमको क्या क्या मेक श्योर करना है, उसके नोट्स अगर तुम दे दो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी interesting for the viewer, because they think that okay, this is a really crucial point that they have taken care of. So if the product is not launched, this, if no business matrix exists, अब इसका हमने पूरा ग्रंथ बात कर लिया है, राइट? इसके पहले वाले स्लाइड्स में. अब पोजिशनिंग, सेल्स डेमो, क्लैरिटी, ट्रस्ट इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें हम पिछले वाले में ऑलरेडी बात कर चुके, तो मैं उसमें घुस. But there are cases where no business metric would exist, and exactly that is where you bring in all those 4 pointers that we just talked about. If it was a mock project, जैसे मैंने अभी फर्स्ट वाले में बोला, अब उसको तुम क्या कर सकते हो? Try to give it to your friends. अब मैं I see a lot of people actually dropping in research and this and that in the groups. Try to drop in prototypes of your product and ask people to actually give you feedback on top of that. अब उस feedback पे जब तुम improve करोगे, you have very clear data कि I made this, but I showed it to users and users were confused here. So based on that confusion, I actually improved this. And once I improved that, the user said कि ये अब समझ आ रहा है. These 4 lines build up the whole case study, believe me. तो तुम अपना जो भी मॉकअप है 2-4 दोस्तों को दिखाओ, उनसे इनपुट्स लो and make changes to your design. Please make sure you make changes and show it to the friends who are not क्या कहते हैं उसको, yes for everything, right? Show it to friends जो तुमको मॉक कर सकते हैं. Show it to friends who are very blunt to you. Only then you will get correct feedback. नहीं तो फिर तुम कुछ भी हगा हुआ डिजाइन बना दोगे और फिर ट्विटर पे डाल दोगे, वहां पे लोगों का कमेंट आने लगेगा कुकड, वहां पे लोगों का कमेंट आने लगेगा क्लीन. कुछ क्लीन नहीं होता, कुछ कुकड नहीं होता, कुछ नहीं होता है. बिलीव मी, ये जितने लोग कुकड और क्लीन वाले डिजाइन बना रहे हैं ना, सब गलत बना रहे हैं. अगर मैं एक एक को मॉक करना चालू कर दूं ना, वो डिजाइन बनाना बंद कर देंगे. इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स में उसमें निकाल सकता हूं. सी, आई एम नॉट सेइंग कि सारे डिजाइनर्स ऐसा करते हैं, बट बहुत सारे लोग वो कुक्ड और क्लीन के चक्कर में गलत चीजें बनाने लग जाते हैं. हाउ डू यू नॉट गेट देयर एंड ट्राई टू मेक समथिंग फ्रूटफुल? इज समथिंग जो तुम इन पर्सन जब 10-20 लोगों को दिखाओगे ना, जब वो गालियां देंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज. देन यू विल नो व्हाट टू इंप्रूव, व्हाट टू नॉट इंप्रूव. And that's exactly you need to target. उसके बाद you will have a lot of things to write rather than just cooked clean. क्योंकि तुम cooked और clean नहीं दिखा पाओगे ना पोर्टफोलियो में. I created a clean user screen to improve onboarding. I don't care as an HR. Then, if there are no design systems, if there are no design system matrix, तुमने कंपोनेंट्स तो बनाए होंगे, तुमने वेरिएंट्स बनाए होंगे, तुमने अपने साइड पे कुछ बनाया होगा, बस उनके नाम पेल दो यहाँ पे, राइट? अब तुम्हारे पास टाइम कितना सेव हुआ, ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, वो तुम बता नहीं पाओगे ऑब्वियसली, बिकॉज तुमने शायद काम किया, तुमने ब्रांड को दे दिया, ब्रांड के डिजाइनर अपने में काम कर रहे हैं, दे आर प्रोबेबली सेविंग टाइम बट यू नेवर नो अबाउट इट. देन यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू डिड सो दैट दे माइट सेव टाइम, राइट? अब ये माइट वाली चीजें बहुत सारी करनी पड़ती हैं सो दैट इट्स हेल्पफुल, राइट? So these are the 4 things that you need to make sure कि यार ये हो रहा है, and then you finally start writing really beautiful case studies. That is all. That is all. That is all. But these 4 points and these 4 points are the most important. रुको, अभी आधा घंटा बाकी है, रुको, जाओ मत कहीं, सेशन खत्म नहीं हुआ है, स्लाइड्स खत्म हुए हैं बस. गजब ढिमने लोग हो यार तुम लोग. हाँ रुको, हाँ. So that 4 points, these 4 points are the most important thing that you need to take care of to write the best case study. याद आ गया तुम लोगों को स्टोरी कैसे बनानी है, तुम क्या हो, हीरो कौन है, क्लाइंट कौन है, ये कौन है, वो कौन है, नंबर्स नहीं है तो कैसे करेंगे, ये नहीं है तो कैसे करेंगे, राइट? अब द थिंग इज, जितने लोगों ने भी ये सेशन ज्वाइन किया है और जितने लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी में है, उनको रिकॉर्डिंग तो जाएगा ही, बट एट द सेम टाइम आई विल आल्सो बी शेयरिंग अ नोशन टेम्पलेट फॉर यू गाइस, सो दैट ये सारी चीजें तुम मिस ना करो, और यू व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग यू एक्चुअली राइट इट बेस्ड ऑन दैट. सो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट, बट फॉर नाउ दैट इज ऑल. एंड गब्बर क्योंकि गुस्सा हो गया, क्योंकि इसको ज्यादा दिमाग नहीं है, ये ना, इसको कुछ समझ नहीं आता तुम लोगों के जैसे, तो ये भी थोड़ा ऐसे वैसे हो जाता है, इसीलिए अभी के लिए खत्म करते हैं. बट लेट्स turn on the mics, and if you guys have any question about anything and everything, this is the time. We have the next 30 minutes. अगर मैं किसी का भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, then I am sorry, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूंगा. I am 100% गारंटी मैं दे ही दूंगा. But let's open the mic for everyone and let's start with the questions.
प्लीज हाथ रेज कर लेना, डायरेक्ट मत बोलो, ताकि we are able to go sequentially. Raise your hands and I will try to solve each question, and we will go sequentially. Guys, are you guys able to open up your mics? Yes. Okay. Yes. Cool. Let's go sequentially. People who have raised their hands, have you guys raised it for the question, or is it raised because you have missed it? I'll wait for 10 seconds and I'll start questioning. Okay, cool. Let's go with the first one. Pinu, if you can just, if you are comfortable turning on your camera, please come on the camera and let's start with the questions. If not, then you can just start talking. You don't need to turn on your camera. It's not compulsory. But yeah, go ahead, Pinu. What do you want to ask? Your mic is off. If you're saying something. What? They left the meeting or something? Okay, let's go with the next one. Nishtha, please ask your question. Hello, hi. Hi. So, मेरे दो questions, actually तीन questions है, and फटाफट I'll ask. And I'm sure कि बाकी लोगों के हो सकते हैं questions. So my first question is, if मतलब you covered a lot of things about the UX case studies, but mostly ऐसा होता है if we are working at some place and we have also done branding and website and sometimes even content. So how do we structure the case study without making it feel like scattered? कि मतलब ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसा ना हो. Okay. Cool. Very quick answer. I'll just answer and then you can jump on to your next question. The thing is कि it completely depends तुमको कौन सी job चाहिए. अगर तुम fintech में apply कर रहे हो for a product design role, nobody cares about तुमने branding क्या करी थी, तुमने social media क्या किया था. Only and only if you are joining a company as a founding designer and you're applying as a founding designer, all these three will make sense. And in तीनों को भी अगर तुमको बोलना भी है ना, apply the same framework. This framework, believe me, works for anything and everything in the world. तुम डेवलपर भी हो तो ये फ्रेमवर्क काम कर जाएगा. दिस इज नॉट जस्ट फॉर डिजाइनर, दिस इज अ यूनिवर्सल केस स्टडी फ्रेमवर्क. सो अप्लाई दिस. द थिंग इज, every time keep it contextual about where you are applying and what role exactly are you applying for. So in your case, if you are applying for a founding designer, only then show all these three. If you are not applying for something like that, you are applying for a junior product designer, senior product designer, lead product designer, where there is already an existing team. In that case, show only one thing specializing in, and rest everything put it in additional work. Don't add any other context. So that should be your way forward. Does that answer your question? If yes, next question. It does. So my other question was कि जैसे for example, if I'm working on a lot of healthcare products and I want to position myself in the kind of work I want to do next and not just show कि what I've already done. So a lot of people say कि ओ तुम्हारा तो ये field में experience ही नहीं है, तो so it makes a little difficult to like switch in terms of field. Because they only see कि ओ इसने तो सिर्फ हेल्थ केयर और फैशन में काम किया फॉर एग्जाम्पल, और इसको फिनटेक के बारे में उतना नहीं पता है. तो हाउ so does this framework also cater to that? Yes, there was one point in the sequence where I talked about reflections. Case study के end में there has to be a section where you mention what did you learn from this, right? क्योंकि learnings are universal, they are not just about one single category, right? So वो category, तुम वो learning कैसे categorize कर सकते हो is very important. इसीलिए reflection वाला section is something which gives you a backing on this. For example, I'll give you a very clear example, right? Payments page on e-commerce and payments page on insurance apps are almost the same. इंश्योरेंस और ई कॉमर्स पे तुमको सोशल प्रूफिंग दिखानी होती है कि हे एक्स मेनी पीपल हैव ऑलरेडी बॉट दिस आइटम. इंश्योरेंस विच इज हेल्थ टेक, उसमें तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स मेनी पीपल हैव ऑलरेडी बॉट दिस इंश्योरेंस एंड सेव्ड एक्स अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो इन दोनों में ये चीज अप्लाई हुई. तो तुम अपने रिफ्लेक्शन में क्या लिख सकते हो? व्हेन आई एडेड
social proofing on the checkout page, the checkout conversion improved by X percentage. As simple as that, right? So reflection वाली चीज में जो तुम mention करते हो, that is the most important part for someone to judge that you are also a fit for other categories. So reflection is what I would emphasize on. And जो fit law, Jacob law, तामड़ा law, प्योड़ा law, वो सब जो law था ना, वो law में जब तुम sentences लिखते हो, जब तुम laws लिखोगे ना, laws will make them perceive it in that particular category, but when you write statements, it will make them perceive in all the categories. So it's completely on your writing style. तुम इतना surface area उसका बढ़ा दो कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में सारे ही categories एक बार में आ जाए. So that is something that you should be targeting. This is how you can solve this problem. Okay, and my last thing was कि a lot of times ऐसा होता है कि we have done a lot of small projects. So how do we identify whether the project is actually worth turning into a case study, or if it should just be like a visual project? How confident are you about the project should be the first question that you should be asking. और ऐसे दिल पे हाथ रख के पूछो, do I want the viewer to see this design? Yes or no? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, put it in the portfolio. There's no set framework that you should be doing. Believe me, if you feel like this should be a part of your portfolio, it should be a part of your portfolio. As simple as that. Just write everything as confidently as possible. Okay. Don't evaluate any of a project. Every project has a learning. Don't evaluate any of a project. Okay, so that was my list of questions. Cool, thanks. Dhruv, please go ahead. Yeah, am I audible? Yes. Cool. Thank you so much, Rajan, for this session. It was really helpful. And my question is around something different. So it's around how can I improve my visual craft as a designer? So what do I mean by that? Visual craft. Visual craft. Yeah. Interesting. Batao. So what do I mean by that is कि I have been working for around 2 years in the industry. मेरे visual designs की basics are sorted. मुझे पता है कि colors कैसे use करते हैं, typography, spacing, visual hierarchy, सब कुछ. And I can create good enough designs for that. Now that AI tools are getting very good, they can generate good enough UI screens. So in order to have a differentiating factor in my designs, how can I bring that? कि आपने कुछ designs देखे होंगे जिसमें people break these rules or experiment with these rules and वो कुछ बहुत ही crazy design बन जाता है. So how can we do that? Do you create one UI design every day? I used to. Now you don't? Yeah, like I have One a full-time unique job. One unique screen every day? I used to do that. Is your full-time job 24 hours a day? No. But he Okay. gets a new job, so I have to gather Okay. content. My first point is, do you create UI designs every day? That is one. Second is, what kind of content you are consuming. Are you consuming before and after content, or are you consuming some literally tasteful content? Do you have any resource websites? Do you have any mood boards created for yourself? Yes or no? There are a lot of things that you need to consider. I'll just give you a simple list. ये सारी चीजें तुम बना लो. Every day, spend at least 30 minutes on this. Believe me, no person in this world is busy enough to not have 30 minutes to upskill, right? Bring out that 30 minutes. वो सुबह हो, शाम को हो, दोपहर को हो, तुम्हारी मर्जी. But each one of you in this call, bring out that 30 minutes and consume that data. Go through the mood board that you have created. Just look at things. Just keep looking at things. जैसे I have a Pinterest board. मैं ये सारी चीजें share करूंगा by the way. Portfolio का जो sample and all तुम लोग मांग रहे हो, ये सब मैं share करूंगा. What I do is every day 30 minutes, I go to this, I just look at designs. I just look at everything new that has come up. I consume that. And the next 15 minutes I spend on actually creating something of my own. One thing that I have learned as a practice is that if I am blocked on non-creative ideas, I actually do the 30-minute thing that I have actually told in videos. What to do in that 30 minutes is first 15 minutes, pick up a problem. ठीक है? Let's say तुम checkout के designs बना रहे हो, cart page के designs बना रहे हो. Create 6 different variants on paper sketch. Create 6 different variants. धड़ 6 variants बना दो and अगले 15 minutes में try to create UI of that. जब तुम्हारे दिमाग में time constraint आता है ना, तुम्हारा दिमाग तुरंत उस स्क्रीन पे जाता है जो वो कंज्यूम कर रहा था पिछले 30 minutes and it will try to extract patterns from there. Once you start extracting patterns from all of this, once you know how to extract pattern, what patterns to extract, which patterns can be broken, then you start creating these 6 designs in just 15 minutes.
राइट? सो तुम जितना रैपिडली यूआई डिजाइन देखोगे, जितना रैपिडली यूआई डिजाइन एक्चुअली बनाओगे on Figma, that is how you actually improve your visual taste. It is not something that people are born with. You have to practice that, and it's a muscle, right? What rules to break, you will only know once you know the rules, right? Try to read material design guidelines, try to read human interface guidelines, why the rule that they have made exist. Every rule has a why behind it. How that why can be solved in a different way is something that you can think of once you start consuming this. For example, search bar यूनिवर्सली was always on top. एप्पल ने एक दिन रैंडमली सोचा कि चलो मैं इसको नीचे कर देता हूं. Everyone adopted that, right? That was a rule that was written. The rule that was written was give user a search bar जिससे लोगों को चीजें आराम से मिल जाए. अब एप्पल ने बोला इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा है कि ऊपर डालना है नीचे डालना है, चलो नीचे डाल देते हैं, सर्च बार से ही मतलब है ना. This is how you break rules. Once you know all the rules, start breaking them. It's not like हर rule break करना चाहिए. There are rules that can be broken, there are rules that cannot be broken, but you will have to by heart everything. मैंने human interface guidelines पढ़ा है, मैंने material design guideline पढ़ा है, मैं design system देखा हुआ है. I know exactly why they are doing what they are doing, and that's why I know what problem that is solving. If I know what problem it is solving, I can solve it in different way. Because there are 10 people, and 10 people will have 10 different ways to solve a problem. This is the thinking frequency you will have to start developing. Only then you will be able to build your visual taste. Resources and all, that is secondary. मैं मेरे mood board का list दे दूंगा तुम सबको. मैं WhatsApp पे सब कुछ ये डालने वाला हूँ. Just go through that. Spend that 30 minutes and spend that 15 minutes, 45 minutes a day. Probably you'll get promoted in the next 6 months. Thank you. Thank you so much. Okay, next one, fast. Kunal. हाय राजन. Hi. तो मैंने एक श्रेया का वीडियो देखा था जिसमें उसने मेंशन किया था कि वीडियो डालने से पोर्टफोलियो में the chance of getting hired increases. Do you think using this framework, creating a video of some sort, will increase the chances? See, the thing is that I would partially agree to that. The thing is ki, how easy can you make for someone to actually go through your work, right? Now there are 10 images versus one video of 10 seconds, right? That builds the interest. Portfolio में video डालना is not exactly for you to get hired. It's for people to get hooked and people get interested in your portfolio, right? उसके बाद people reading your portfolio, the number of that increases. That is the reason there can be positive outcome through that, but that is not exactly for you to get hired. That is for people to get hooked and people to go through your portfolio and see what impact you have created. So by the way, videos बनाने के लिए there are a lot of tools. Jitter use कर सकते हो by the way तुम videos बनाने के लिए, and videos is not like you defining something, like you presenting. It's more of a just a visual representation, mockups and stuff, right? So jitter use कर सकते हो, Lottie Labs use कर सकते हो. There are a lot of भाई Figma का भी motion आ गया है. Use that. But yes, it is to hook the reader, then make the user say yes. As simple as that. Okay, thank you. Yes. Next, Gauri. Hello. Hi. Hi. I think it might be a stupid question, but I'm just confused whether I should make No question is a stupid question. whether I should make a Behance project or make a website of my own. See, a very blunt question. Can you buy a domain for yourself right now? No, Do you know how to use Framer? a bit. Do you know how to use Webflow? No. Build a website. Figma. Because you build a website. Okay. See, the reason why I asked you, do you know how to use Framer, is a very simple thing. Framer gives you free subscription, right? And because you said you cannot buy a domain for yourself right now, Framer will give you a free domain as well. Build it on Framer, create all the case studies. Two reasons. One, Framer ka load time is very less. Second, Framer ka load time is very less compared to Behance, right? Behance pe hota hi hai na, because it is very heavy on images, it takes a lot of time to load. And by the way, if you guys don't know this, Behance requires the viewer to actually have an account on Adobe, right? A lot of times Behance pages are public, but वो Adobe में login करने के लिए बोल देता है, जिसके वजह से recruiters actually get put off and वो छोड़ देते हैं, right? They don't even skim through anything. So it's better if you have a website, because
It's all in your control. Never ever create something which is not in your control, specifically if you are doing it for a portfolio. Do it on Framer, share it with the recruiters. You will have a better conversion rate than Behance. Does that answer your question? Yeah, perfect. Thank you. Okay, Pino is back. So I guess now you should be able to turn on your mic and ask the question. कुछ प्रॉब्लम है क्या? Oh, mic चालू है, mic चालू है. Yes, please go ahead. Please ask your question. फिर से? Okay, if you are facing issue, just drop your question in the chat so that I am able to read it at least. Because you were the first one to raise your hand, that's why I'm just putting you up in the line. चैट में डाल दो, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं. चैट में डाल दो, मैं आंसर कर दूंगा. भूमि, प्लीज गो अहेड. Hi, Rajan. Hi. So my question is that most UX portfolios have 2-3 case studies instead of just one. So how Yeah. do you structure the portfolio so it doesn't feel repetitive, overwhelming to the person reviewing it? When you say 3:1, are you talking about different projects or what? Like what exactly have you been pointing at? Different projects. See, there are a couple of things you need to make sure of. I'll actually go to that slide, by the way. Whenever you are trying to structure your portfolio, I want you to answer these questions. Are you able to understand a messy problem? Are your designs thoughtful decisions? Can you explain which direction you chose and why? If you answer these 5 questions, you will exactly be able to prioritize which one should I put first, which one should I not. Any of the project, if it is answering all the 5 questions, it has to be first in the hierarchy. If it is answering 4 or less, second in the hierarchy, 3 or less, third in the hierarchy. Every project, I am 100% sure, projects are not something जिसमें ये पांचों आंसर every time answer हो जाएंगे. That's how you structure it in a way. That's how you sequence it. Prioritize it based on how much more impact you can show about you, how much more guidance you can show from your side, and keep it the first one. As simple as that. अगर वो एक project है बस, make sure all these 5 questions are answered. If there are 3, prioritize it in 1, 2, 3. Does that answer your question? Yes, it does. Thank you. Just have this, screenshot this or whatever. I'll share the slides. But these are the 5 questions you should always be asking before prioritizing or before doing anything else. Cool? Yes. Okay, let's move ahead. Rishabh. Hi. Am I audible? Yes. Okay. So I actually am right now working on a case study that the project I'm working on. So it's actually a healthcare project, but it is actually a very massive project which is spanning across the US. So like I've worked on it for the last 4 months. So like case study document करते time the only problem I have is the project का complexity बहुत ज़्यादा. Like I myself worked on more than 600 screens in the last 4 months. So how to document that, because pointers I have, because the project is mostly about the criticality, like microseconds where you can like easily here and there, because it is actually the connection between blood centers and the hospitals. So they're spanning across the US. So how to document that in such a way, because most of the screens are actually repetitive screens with just few of the components here and there. But since the process is very complex and the screens are very much, so how to document it in a one case study? Okay. What exactly I can do? Okay. I have some clarifying questions. Is it a freelance project or you're working in this company? Okay, it is actually a client-based project. I'm working in a service-based organization, which is actually a US-based company. Okay, so you're a consultant? I'm a consultant. Okay. Do you interact with the concerned team on day-to-day basis, like product managers and stuff? Yes. Okay. Can you break down the project into multiple modules? Like for example, if this is a a health tech product, I assume there must be some hospital listing, there must be some adding the hospital, there must be some checkout related stuff.
Am I correct? Yes, there are many modules. Correct. So wherever you have these kind of, and now this is something which actually everyone can gain from. The thing is that whenever you have a very huge project, break it down into different modules. How I optimized the onboarding of an hospital for X brand. How I optimized the listing of hospitals for X brand. How I optimized the checkout experience or probably the connection experience for X brand. Now, from this one single project, you actually have 3 different case studies to write about, right? So make sure you always break it down into smaller module pieces, and each of this is something which is very, very impactful. Now, I'm not saying if you have created 600 screen, that means that 60 case studies. No, I am saying list down all the modules that you think are very important. List down the modules that might be common across different categories and write case studies on top of that. For example, listing is something which can be fruitful for e-commerce as well. So e-commerce companies can also be interested in you because you solved listing for hospitals. Onboarding of hospitals can be very fruitful for companies like Zomato, where they onboard hotels. So these kind of things will actually attract Zomato as well. Oh, once again, did you just leave the meeting? No. You went off my grid. I thought you left the meeting. Okay, so yeah, you get the point, right? So these kind of things, try to list down, like right after this call, sit and list down all the modules you have created. Try to cross-link it with different things. What are those different things? What all categories that it fit? Whichever module fits in more than 2 or 3 categories, that should be the first case study on our portfolio. This is how, right? I would say extract at least 2 or 3 different modules and try to write a case study in detail. You will have a very beautiful case study if you do this. And yeah, just one more thing about the case study. Yeah, please. Since like that particular organization is actually revamping their whole system from that 30-year-old Oracle form system to a new, like brand new design system and a brand new product. So like I myself created like more than, I guess, 40 to 50 new components, which is again spanning across that whole product. So that can be a separate case study, or it can be included. Yes, that should be a separate case study. Because it is mostly about the usability, because earlier there was no usability. It is actually a habit forming thing, because whatever the people are working in the labs of those hospitals, so they are actually trained on that particular setup. So now they are actually moving into a more usable setup. Understood. Okay, fair. So yeah, design system should be a separate case study altogether. Gotcha. Yeah. Does that answer your question? Yes. Perfect. Let's move ahead. Prisha. Yeah. Hi, Rajan. First of all, love your content. And my question is, आज के मीटिंग में पहले इंसान ने तारीफ की, मजा आ गया मुझे तारीफ सुन के. कोई भी तारीफ नहीं कर रहा था मेरी इतनी देर से. Yeah. But yeah, thanks. So the question is that I genuinely struggle to find the right problem to solve. And I guess most of the people would, as like junior designers. There are like many redesigns and case studies out there, of course, but like to find a genuine real world problem which is relevant enough is pretty hard. So like how do you find that? And like, yeah, that's it. मैंने 4 वीडियो बनाए इस पे 4. Okay. There's a video where I'm talking about NGOs, right? I think that is my favorite. I think that is my favorite thing to tell to anyone who is trying to create projects or find real world projects. The thing is that NGOs na website optimize nahi karte hain for people to donate, right? So can you try to find these kind of people and improve their donation frequency? Can you try to pick up their website and try to change it in a way where like people are coming and they know what impact this NGO is creating and start donating? There's a very beautiful case study of one of the donation websites. मैं वो case study, by the way, मैं एक list बना रहा हूँ case studies का. उसमें एक case study है. It's एक बहुत ही popular designer है. उसने एक NGO का website optimize किया था to improve donations. अब there are a lot of such NGOs, right? Can we just pick one NGO and try to optimize their website rather than creating a dog pet and grooming ka problem statement, right? So this is one of the place where you can actually find really, really good use case, NGOs. Second, government websites, state, specifically state को target करने वाले. अब US में there are a lot of design agencies that make the government websites. India में ऐसा सही सच नहीं है, right? Have you, do you have an Aadhaar card? You should have an Aadhaar card. Yeah.
You have. Have you ever tried changing the address on your Aadhaar card? Yeah, I did. You did. Have you used the website or the mobile app? The website. Is it annoying? I don't think so. I recently did it and it was pretty normal. Correct? If Yeah. you had to redesign that, how would you optimize that? That is something you can pick up as a problem, right? Okay. See, the thing is that probably you have not seen a lot of simplified or easy flows. I would want you to see a lot of simplified flows, specifically in this category, and try to figure out what kind of things are repetitive, are redundant. Can I optimize on this? Can I optimize on that? Try to question yourself. Government websites, Aadhaar for that matter, are you interning or you have a job right now? So I'm going to be starting my master's in design. Okay. Have you worked, like, have you interned or I had a have, job? I have. Right? Yeah. By any chance, have you tried the PF website? No, not really. Okay. So a lot of employees here might know that you get access to PF portal, It's a where nightmare. the PF deductions are actually submitted, and you can claim it once you leave the company, right? The PF website, believe me, is as Rishabh said, nightmare. It's the shittiest thing you will ever experience when you are trying to withdraw your own money. That is a huge problem statement. Can you optimize that? Try to find these kind of problem statements. You will have a lot of problem statements to solve. And I mean, and these, all of them are impactful. All of them are something which people are really having pain using. So these Okay. are a couple of things. Yeah. Also, one more thing, like Yeah. when you're creating a project, how much leverage does research, how much leverage does process and the final UI has in terms of like when the recruiter is analyzing the whole project? See, all of them have importance. Research, yes, because why did you come up with this problem is something that everybody is curious about, right? Why did you come up with this problem is where research plays a huge role. Process is something where how did you reach the solution, right? And at the same time, final outcome. But in terms of weightage, make sure that the final outcome is presented in a way where it gets hooked, because final outcome is something which will make them read the research and make them read the process. If the final outcome is not impactful enough, they will never read the research or process. And a lot of people, what a lot of people do is 50% of their case study is just research and problem framing. Don't do that. It has to be only 2 lines. Believe me, just 2 sentences. Research should go off in just 2 sentences. Nobody cares about user persona. Nobody cares about which method you are using. Nobody cares about that. If you really want to mention that, I would challenge you to summarize that into 2 lines. If you are able to do that, you have written the best portfolio and best portfolio case study in the world, right? So final outcome has the most impact because it gets hooked. Research and problem statement gives the direction to the HR to actually how to consume that data. So if I want to quantify it in numbers, I would say 70% final outcome, 10 would be process, and probably 10 would be research, and 10 to yada other stuff. Okay, got it. Okay, thank you so Let's much. move ahead. Yeah, Dazzle. Hi, Rajan. Thank you so Hi. much for these workshops and for your videos as well. I have 2 questions. Yes. If you can help with that. Basically, I have been working from last 3 years. I just completed in the company 3 years now. So the question is more around the NDA part, because I feel somewhere that there are 2 types of projects. Either it is self thought ideas, and then you create a case study on that, or because I have worked in a company and like more than 8 to 10 projects like that in 3 years. So somewhere I feel real work is real, but again it is NDA signed, and there are even projects which have not been developed yet. They are still getting developed. Even some of them which got developed are something to be used internally, and they are not public. So in that case, are we even able to show that in our portfolio? Should we do that or should we not? Because only having personal things, I don't know. Okay. Yeah. See,
In terms of NDAs, there is a way out of it. I'll give you two answers. Okay, one Okay. is when you are able to change the clause in the NDA. ये गुब्बारे कहाँ से आ जाते हैं यार? When you are able to change the clause in the NDA, if you are allowed, because if you are a freelancer, you have all the rights to change it. If you are someone जो company से obliged है and you cannot do that, the other route will work for you. But let's talk about the first route. First route में NDA में बहुत clearly ये mention कर दो कि authorship और ownership rights separate रखेंगे. If you have the authorship rights, because you have created it, right? If you have the authorship rights, you are free to present the work in your portfolio once the product is launched. Correct? If you are not able to get the authorship rights, then what you will do is you will not use images, you will only use text and numbers. Okay. Believe me, this is so beautifully written case studies, stories and stuff. If you are able to write that beautifully, nobody will care about the images that you will that you might be adding. Just on the top, mention that for confidential reasons, there are no mockups available. I will only talk about the impact that I created, as simple as that. But writing a case study, believe me, does not require images, mockups and stuff. If you have a genuine NDA, just write text. I improved XYZ because I improved XYZ on an internal tool because the company was facing XYZ problem. As simple as that. You don't have images, no problem. You have matrix, play on top of that. And there are some which haven't been developed, and that's why they are not with the users. So how do we really get the numbers? If you don't get numbers, you talk about what you improved. Like, जैसे मैंने बोला, if the flow is of 10 screens and you redesigned it to be only 4 screens while keeping all the context, that is something you can talk about. Yes, You can talk about you can talk about how you optimize the checkout screen, how you optimize trust on the checkout screen, how you optimized permissions, asking permissions on all the contact related screens and stuff. This is something that you can talk about if you don't have numbers. So even if it is a very large project, then you can take out some 2-3 things that you improved, and then you can show that in 1 or 2 case studies. Exactly. Just like take out some modules and start talking about it. Okay, thank you so much. And yeah, again, should we have numbers in resume? Because some people say resume is nothing without numbers. Is that true? See, if you have numbers to show, please show them. If you don't have, don't lie. Okay. Right? And even if you don't have numbers, I have literally given you like what 8 and 9. How much? 17 things to write about. Yeah, correct. Not less. Right? So don't worry about that. If you have numbers, show. If you don't have, absolutely don't show them. But write these kind of things. What you optimize, how you optimize, and stuff. Thank you so much, and pleasure talking to you. No worries. Saksham, go ahead. So basically I started working in this new company and उनका app functional है. ठीक है, मैं context देता हूँ थोड़ा सा. अभी we got to know, थोड़ा ये question is not about portfolio or anything like that. उनका app अभी functional है, right? And I got to know कि यार हमारी marketing is not gonna happen on a viral reel or anything like that. Most of the users that come from on the app are high intent users. They read our blogs, they see our YouTube videos, and then they come to our app, right? So right now I need to optimize that app for word of mouth marketing. The PMF is there, the product market fit is there, right? People love the app as in like on a functional basis, but they are not referring to other else. ठीक है, मतलब referral flow is one of them, but do you think anything else in the app I can add जिससे word of mouth बढ़ जाए उस app का? ठीक है, it's an investment platform, global investment platform like IND Money or Vested. Got it. Yeah. I have couple of clarifying questions for you. Does your product have milestones? Yes, for KYC it have. No, not KYC. If it's a finance app, are the users open enough to share how much they are saving or using your app? No. Do you have a referral loop? नहीं, अभी कुछ नहीं है. Do you have anything related to personalizations where users get a personalized feed or personalized photo or a personalized identity card when they join the platform? No, they just get like user sense. That is one. But अभी nothing about personalization. It's just उनके पास एक खुद का portfolio है for the whatever they are investing in, but nothing else. It's just on the functional layer. Got it. See, the thing is,
Users only spread word of mouth in two occasions. One, when the product is genuinely very, 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 very good and very, 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 very trustworthy, which is Zerodha, for example. Or second, they get some boast-worthy rights through your product. What is the boast-worthy right through your product that they might get? Can you try to find that kind of thing? For example, boast-worthy thing can be that, hey, I signed up on this platform and they gave me a profile card customized to me and my name and my profession XYZ, right? This is something which you can talk about. Is there anything boast-worthy about your product? Is there anything which is extremely good about your product, which is not there in any other brand? Is something that you can push your user to talk about. You have to create loops. It does not come naturally. You have to create certain loops where you actually tell the user that, hey, did you like this? Would you want to share about us? For example, if the user has done 2 or 3 investments on a platform, tell the user that, hey, we just realized that you have done 3 investments on with our app, on our app. Do you want to tell your friends about it? Do you want to share this on your social media? If they click on share this on social media, just give them a customized image that says, I have invested into 3 assets on this particular platform. You can join too. If you give them anything which is share worthy and boast worthy, they will definitely share it. Now, what exactly is it in your case? You need to find it out. Got it. Got it. Okay. Does that answer your question? Yeah. Okay. Milestones. Let's move ahead. Milestones. Yes. Bhargavi, go ahead. Hi Rajan. Hi. So my question was like I'm working in a startup company from past like 2 years, and now I'm moving forward and searching for a new job, and I'm writing a case study about that, what I have worked with that company. So Yes. the product was mostly of the procurement, so where user would find the manufacturers and everything. So firstly, when I was working, it was a seat like nothing. They have nothing related to project. So we started from research and everything. So the main goal of the owner was to have a product where a user can find the manufacturers and work with them. And in that project, the AI part would be the like it would be the part of the project, not the whole concept of the project. So we started with that. We worked for on that for 1 year, one whole year, where we researched, made the design system, and also created whole screen. Also, the half of the product was developed by the developer team, and then suddenly the owner decided that now we will convert this project whole into the AI based product. Like we will give the prompt and the work will be done by AI. So now, while creating this, and we also created that project. So the second part also, and now while writing my case study, I'm confused because I have one problem statement, right? And I have 2 products related to that. First, where it was basic product, and next was now the AI driven. So I'm too much confused, like, and the whole research is done on the first part. The second part was just a redesigning of that and adding some element, of course, but still, I'm so confused how, and if I put both the part in my case study, it will be lengthy one. So what should I do? Write 2 separate case studies. Okay. That's the easiest thing you can do. And I think there's some echo on your side. Just mute yourself once. I will. Yeah. Okay. So see. Still. Yeah. So see. Write 2 different case studies. One with the previous version, next with the second version. Right now, this is. I think you are in a very good spot right now because see, you have 2 different kind of solution minds to show with just one project. In the first project, try to write everything and anything that you did for that project and make it as complete as possible. At the end, because you don't have matrix, talk about what I have just told you, right? Like how you optimize certain flows, how you use certain laws to create XYZ things, right? Talk about all that in the first version. In the second version, pick the screens from the first version and say, this screen changed to this after in V2. So write 2 case studies. One, product V1, product V2.
In product, we even show all the research, this and that, and make it as detailed as possible with the sequencing that I have told you, the story writing skill. And then in the next one, pick up the images from the first one, put it there, and have a before after showing that before AI, after AI. It will be the V2 of the project, and clearly show that these are the two separate milestone projects, because it was not parallel, it was sequential. So 2 case studies is the way to go, and I think that will be a very powerful thing for your portfolio in general. All right, thanks. It was really confusing. Like I was like struggling with this part by last Yeah, 3 to 4 months. So thank you. just write 2 case studies. I think you'll be a very good. Okay, thanks. Okay, let's move on to next. Radha. Hi, Rajan. Hi. Hi. My question is, when I started in a designing, I started my career as a UI UX designing at a service-based company. Then I had a gap of 3 years actually. And now I started again, and I'm really feeling very confused where to begin, because I think I'm misled, or maybe somewhere I missing very important part, because when I started, I get only 1 year of experience as a UI UX designer. The part of me thinking I should build a case study from my old project and create a strong portfolio, but at the same time, there is so many new things to learn, like AI, product thinking, design system, UX research, and prototyping, and other things. Because of that, I really like switching direction and getting misled. I don't know where to should focus and learning new skills or spend my time building my portfolio. So please tell me and guide me. So I really have a couple of questions for you. Yeah. Are you scared of starting fresh? Yes, little bit, because मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता भी नहीं है और मुझे आता तो है, तो मैं इन 2 चीजों में काफी कंफ्यूज हूँ. Correct. I would recommend go start an internship. Okay. Forget Got that it. you were working for 1 year. Imagine that you just got out of college and you're looking for internships. Go work with teams. Try to understand their current work patterns. Try to understand how they have started thinking. Unless you have at least 3 to 4 people around you who are talking about how design functions in today's date, you are not going to skill. As simple as that. Try to find an internship. See, if pay is a problem, try to find an internship which gives you a good pay, but try to start as a fresher. Don't try to show your projects which was 1 year ago and then try to get a job on top of that. I would not recommend that. If you want to build a case study, pick up one NGO website or something and build a case study on top of that, based on your today's knowledge, exactly what you know, not anything that you are faking. Exactly what you know. Go apply to an internship. Try to find a team where there are at least 3 to 4 people who you can learn from. Do an internship there at least 3 to 4 months. Post that, evaluate your skills, list down what all new you have learned, what you have not learned, and there are things. See, let's say if you list 5 things that you have learned and not learned, if the not learned is more than 5, then do another internship. If not learned is less than 3, try to find a job. Please make sure the not learned list has to be less than 3 or 3. Other than that, don't try to find a job. Only do internships until you actually tick off all these 6 items that you have not learned yet. But internships is the route. Don't try to go for a full-time job, or probably you will be in a bubble of to fit in at places that you not belong to. As simple as that. Okay. So can you suggest me or help me कि like how can I practice daily? मतलब मैं UI पे अगर अपने आप भी कुछ काम करना चाहूँ, तो मैं उसको कैसे daily like pile up करूँ कि अच्छा ये शुरू करती हूँ, then कहीं तो पहुँचूंगी. Right. I just answered this question for someone, but I'll repeat that. Spend at least 45 minutes every day where you are basically going on Pinterest and finding the screens that you really, really like. I listened to the answer. Yeah, go on Mobin and find screens that you really, really like. Replicate those screens. This is one. Second,
do the 30-minute exercise where you take up a problem statement, create 6 screens in 15 minutes on paper like sketches, and in the next 15 minutes create UI of those screens. Now the UI of this, the speed or at which you will do the UI of those screens will completely depend on what all you consumed while looking at the mood board. So try to scroll 30 minutes every day on Pinterest or Movin or any page where you have a lot of UI designs shown. Try to just scroll. Don't try to reason or anything. Just scroll. Your brain will start learning patterns, and eventually when you actually start applying it, your brain will automatically flash all those patterns one by one. Okay. Thank you so much, and this session is a very great, मतलब like on point content है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा confusing हो गया है, ऐसे design jargon में बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे confuse हो जाते हैं because of the design jargon. Yes. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay, Bye. next one. Janvi. Hello. Yes. Hi. Okay. Hi. So I'm currently working in an SaaS marketing SaaS platform, Okay. which is an MNC. And Okay. currently, I was hired in few months ago only, and my job is to redesign their website. Okay, but as I am moving forward with the process, the thing I'm facing with is like it's an MNC and there are level like higher level of people which are giving me feedbacks over that design. But the Yeah. thing is, I'm actually I'm trying to share my point of view, like why I'm choosing this type of design, why I'm choosing that this much type of content, limited content or more content, and or the interactions and all. But when I try to explain them in easiest form, they are like, no, it's not landing with me, or they have like suggestions over that. And the thing is, they don't have any website background, even though they have a higher level of. Then how should I convince them, or how should I tell them like, I Ooh. think you have got that point. Yeah, what yeah, I'm I get trying the to problem. say, yeah. I think this is a problem that almost everyone faces as a designer in general, no matter how experienced you are. Even I face this today. Okay. But one thing that has helped me Hmm. is, see, a lot of democracy in design is not good, as simple as that. But if you work in an environment where there is democracy, one thing helps is talking to users. If you create a page, if you create a section that you think and have high conviction that this will work, and they say it will not work, immediately call 10 users, show them the screen, and ask them what do they understand from that particular screen. If the user says that XYZ is my learning, Mhm. which means your design is proved. If the user says, I am not able to understand anything, which means you are wrong, accept it, change the design. But never rely on higher stakeholders, as simple as that. Whenever you have this argument, just tell them, let's go talk to 10 users. If they say that they are not understanding this, I will change the design. If they say that they are understanding this, I will not change the design, because I am designing for them, not you. Okay. Who you are designing for? You are designing for the viewer. Right. You are designing for the consumer that is going to pay them money. You are Absolutely. not designing for someone who is sitting beside you and watching something on YouTube and giving you judgments, right? Yes. This should be very clear in their heads, and this will only happen if you directly tell them, let's talk to users. Mm-hmm. If they are aligned, let's accept that. If they are not aligned, let's change it. As simple as that. I have used this for last 4 years, 5 years. Mhm. Every time I do this, most of the times we get the right answers. And obviously, see, design is an iterative process. You should accept that the design did not work. Accept it with proud that, hey, my design is not working. You were right. Customers are right. I will change it. If your design is working, accept it with pride that, hey, my design worked. You were wrong. As Yeah. simple as that. But users are someone who will break this chain. Nobody else can. Right. Okay. Got it. Cool. Yes. Also, Thanks. just adding Yeah. one thing, never ever, as I already mentioned, never ever mention law names. Hicks law, Fitts law, this law, that law. They don't know anything. Yeah, I get it. Don't do that. Never do that. Yeah. Okay. Thanks. Cool. Yes. Cool. Okay, the next one, Poonam. Last question for the evening, guys.
Poonam, go ahead. I am audible, sir? Yes, you are. हाँ, तो बेसिकली मैं अभी फ्रेशर हूँ, मतलब रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीसीए से. ओके, तो आई वांट टू बिल्ड माय करियर इन यूआई यूएक्स डिजाइनर. तो पोर्टफोलियो पे काम करना अभी सही है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है. Are you looking out for jobs? हाँ. Then create a portfolio. There's no other way to get that. So the thing is ki, if you have projects to show, create the portfolio. If you don't have projects to show, find a project, create a portfolio, and then start applying. Once you start applying, Okay. it becomes, see, the thing is कि सबके पास ना time नहीं है तुमसे बैठ के बात करने का, right? They will judge you before they actually talk to you. अब on what basis they should be judging you is something जो तुम्हारा online presence है, and one of that is your portfolio, right? So it's very important. तुम in fact अगर तुम apply नहीं भी कर रही हो, just work on your portfolio. That is the most basic. That's the most basic thing that someone will look before they start judging you, right? Tell me one sequence where a recruitment manager came to you and sat and talked to you to understand your design preferences. Never, right? And this is never going to happen. You need to have one easy way for them to do this, and that is the portfolio. That is the only route for you to get a job or internship. तो सर पोर्टफोलियो का डिजाइन जैसे नॉर्मली सबका होता है, उसी पैटर्न पे रहेगा? It's completely your choice, by the way. The thing is कि a lot of people like creative portfolios, a lot of people like simple portfolios as themselves, right? मैं किसी देखने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो खुद बना रहा है. I like maximalism kind of portfolios, right? But my portfolio is still minimal because बहुत ज्यादा experience हो गया है, तो मेरे को चीजें एकदम to the point लिखनी पड़ती है. But I'm going to create one page जहाँ पे full मस्ती होने वाली है मेरे portfolio पे. But that's my choice. My website is my online home and I want to keep it how I want to keep it. So there's no set template. जो तुमको पसंद आए करो. But make sure whoever is trying to hire you understands what you're trying to tell them. That should be your target. Theme ये वो फलाना ढिमका वो target नहीं होता. Understanding target होता है. Okay. Thank you, sir. Cool. पीनू ने 5 क्वेश्चन डाले हैं चैट में. She tried twice to ask the question, but she was not able to. I will answer her questions now. मेरा डिजाइन बॉक्सी लगता है, कितना भी ट्राई करो. Cool. डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन एक के बाद एक आंसर करते हैं. डिजाइन बॉक्सी लगना is simply one thing. You have not. Pinu, are you on the call? Can you raise your hand at least? Yes, you are on the call. Okay, I am answering your questions. हाँ. See, boxy design is something which clearly means that you have not yet seen a lot of screens. You are not scrolling that. You are not doing that 30-minute scroll every day. You should actually make sure that you are doing that so that you know कि दुनिया में कैसे कैसे डिजाइन्स बन रहे हैं. बस रेक्टेंगल्स और सर्कल्स के अलावा कौन कौन से शेप्स एग्जिस्ट करते हैं in general. Your consumption of content in terms of mood boarding and in terms of design choices should increase. That should be your target. Create your favorite screens ka mood board on Pinterest. Create your favorite screens ka save folder on Mobin. Every day visit them. Every day try to replicate it. Every day try to make it in such a way that you are replicating and copying those screens on daily basis. After 3 to 4 weeks, you will realize that your hand on UI has improved a lot. So this is one exercise you have to start doing. It's a must. Otherwise, boxy designs boxy ही लगेंगे. ठीक है? Second, मुझे creativity और modernization में issues आते हैं. कहाँ से शुरू करूँ? Creativity, see, 10 प्रॉब्लम एक सोल्यूशन. तुमको अपना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा. ट्राई टू कंज्यूम थिंग्स. नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है बाय द वे, एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक. वहां पे डिजाइनर्स के अलग अलग केस स्टडीज हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज हैं वेयर दे आर एक्सप्लेनिंग व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन दे मेड एंड व्हाई दे मेड दैट डिजाइन. दैट इज समथिंग दैट you should try to watch. You should try to create the mood board that will inspire you in doing that. And you should have your own library of things that you like and dislike. Once you are very clear of what you like and dislike, तुम्हारा creativity अपने आप step ahead लेना शुरू कर देगा. Modernization, यार देखो, modernization ना एक term है जो लोगों ने बना दिया है. अब modernization is not something which is a hard written rule.
it's basically the need of the product. अगर प्रोडक्ट को मिनिमल होना है, मॉडर्न होना है, देन मॉडर्न बनाओ. अगर प्रोडक्ट को मिनिमल नहीं होना है, कुछ और होना है, तो मॉडर्न मत बनाओ. एज सिंपल एज दैट. I would rephrase your question. Instead of modernization, you should talk about upskilling कि नए नए tools कैसे use करने हैं, this and that. That should be your goal. मैं stuck हो जाती हूँ कि next में क्या करूँ एक task complete हो जाने के बाद. ये complete वाली चीज, if you are talking in the context of company, it's completely your stakeholders problem. Ask your product manager to give you the next task. But if it is not a company problem, if it's a you problem, then the thing is that any and every case study needs restructuring. Try to figure out that kind of things. If you don't have anything to do, try to upskill. If you see, जब हम टास्क लिस्ट बनाते हैं ना, डोंट ट्राई टू क्रिएट इट इन दिस वे. डोंट ट्राई टू बी लाइक हाँ लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, पोर्टफोलियो पेज डिजाइन करना है, ये डिजाइन करना है. टास्क लिस्ट अगर तुम ऐसे बनाओगे, यू विल गेट स्टक एट अ पॉइंट. ट्राई टू मेक द टास्क लिस्ट इन सच अ वे, लैंडिंग पेज सेक्शन 1, लैंडिंग पेज सेक्शन 2, लैंडिंग पेज सेक्शन 3. इस तरीके से अगर तुम अपना टास्क लिस्ट बनाना चालू कर दो ना, और इस तरीके से अपनी चीजें करो, then you will automatically try to think of things that might improve what you are already doing. So if you have less work, don't try to make more work for yourself. But if you genuinely are not able to figure out what to work on next, try to break down the problem that you are working on to the most granular point. उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारा काम आ जाएगा. मुझे पहले अलाइनमेंट, टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन रिलेटेड इशू आते थे, लाइक फॉन्ट साइज रिलेटेड. सी दिस इज समथिंग जो ये ना बहुत बेसिक होता है. यूट्यूब के ना 4 वीडियोस हैं, मैं तुमको आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. There are 4 videos, 3 minute videos hai. It will clearly teach you typography, it will teach you color, it will teach you color, font pairing and stuff. But believe me, ये problem तुमको कभी नहीं आएगा if you are spending every day 30 minutes on replicating screens of others. So you can discard this problem at the first place if you are doing the first exercise. As simple as that. Final, मैं मेरी डिजाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, if उसमें कुछ इशू भी है तो भी. Exactly. You need to start questioning the designs of others. Only then you will start questioning design of yourself. Last वाले meet में मैंने एक simple सा exercise बताया था. Whenever you try to open an app, try to question every design decision that has been made in that app. Zomato का search bar top पे क्यों है? Zomato का first section इतना बड़ा और animation क्यों होता है? Zomato के bottom bar में 3 बटन क्यों है? Zomato का bottom bar का last button healthy mode क्यों है? These kind of questions when you start asking and try to find answers. If you are not able to try to find answers, take a screenshot, put it on ChatGPT, ask the question to ChatGPT and ask it to explain it to yourself. Try to do this exercise every day for at least 10 to 15 minutes, and the insights that you will gather, you will start applying it. You will start correlating that with the design choices that you have made in your design journey, and you will start having answers for these questions. Cool? If yes, just do this, or probably just lower your hand. If I have answered all your questions. I have. Okay, cool. I have answered all your questions. Guys, while I said that this was the last question, 2 people raised their hands. I will take these 2 questions. Please go ahead. But after this, I will not be able to take questions because obviously हम आधे घंटे आगे चल रहे हैं time से. Kajal, please go ahead. Hi, Rajan. Basically, Hi. I got answers of a lot of questions in the call itself, but I was actually working in retail since this year, and now I'm planning to switch into UI UX design because of a lot of reasons, Okay. health and finance and stuff. I kind of got overwhelmed last night because I have a project idea and I've been working on it. Like I've done the user persona, empathy, affinity, everything. When I started with the wireframing, I am getting overwhelmed because there are so many things, like you said, typography, color combination, and I got to know that everything has a reason behind it. Like if it's 2 colors, then why it's 2 colors and how are they Yes. related. So when I'm trying to find answers for my product, I'm not able to understand, like, okay, if I want this emotion for my product, so which color will go ahead with that, or which typography will relate with it, or which visual design to go ahead with that. So how do I approach it? Because I want to start as an intern as soon as possible, but at the at the same time I want to use my
prior experience. So I was a product manager. So this is the vision that I have for my portfolio, that I want to use the case study in such a way that it incorporates my earlier experience of how I think about a product in a business perspective. So I'm just confused, like which part should I focus on and how do I go about it, because it's a lot right now. Got it. So see, in your case, because you were already a product manager, you already know how to talk about metrics, how to talk about what kind of problems you are solving. Product managers are very good at coming up with problems, and I guess you have already done that. If you have come up with certain problems, what would your designer mindset do to solve those problems is something that you need to start documenting first. Once you start documenting that, how would you solve it as a designer should be your next step. So whenever you are trying to present something from the product manager's perspective, when you are writing the case study, try to mention the team in that. Mention that you were the product manager and this was the designer who was there with me. This designer created this screen. This was my feedback on that screen, and based on that feedback, the designer made these changes. यहाँ पे हुआ क्या? You basically told the recruiter that, hey, I was a product manager, but I gave some genuine inputs to the designer through which the designer was able to improve the designs. This is something which is very fruitful, which gives the person a sense that what kind of design thinking you have. As soon as you start climbing the ladder of proving that you have good designer sense and design thinking, people will start perceiving you in that manner. Once they start perceiving you in that manner, that is exactly when design related case studies will make sense on your project. So write case studies, mention in team that PM this and that. Now looking out for designer roles, this is what my design sense extracted out of this case study. As simple as that. You don't need to be explicitly about design mockups and stuff. Okay. Does that answer your question? I'm so sorry to cut you. I was in retail, so fashion retail product manager. But I got the gist. Maybe I can I don't know. Fashion retail product manager, does that mean inventory management and stuff? No, it's like working with designers who, for example, if we are making a t-shirt, then whole collection is coming. So working with designers, working with vendors, everything to get the product in the market. If you're wearing a shirt right now, how did that reach there with the design and Got vendor it. everything stuff? Got it. There's a process in that, right? There's a problem A, and then there's a solution, and there's answer B, right? So the process is something that you need to document. As simple as that. Document the process. As soon as you start documenting the process in a way where it leads to a solution, it's a case study. As simple as that. In any case, right? See, let's take it as simple as possible. You wake up in the morning till you sleep in the night, you have at least accomplished one task. How did you complete that task is the story you can write about. Now you have managed the whole the last mile stuff for this particular shirt, right? You can definitely write a case study about it. Okay. So you are basically telling me that I can frame my product. It's not a retail related product. It's a new product. It's basically a photography doing app. So it's a completely different thing. But I want to, I don't want to come out as a fresher because I know how the product works. But again, I'm a fresher in UI UX. So I'm trying to find That's a right. value. See, your case study should have the product management experience presented as a case study because you have done that. After that, have the second case study, which is about the photography app that you're talking about, right? In the first one, clearly mention what your design sense told you and how you functioned there, what all kind of inputs you gave so that the designers were able to solve their problems, and how you brought in those learnings to create this photography app. There has to be 2-3 case studies so that the story is linked properly. When you are introducing yourself, clearly write a product manager turned design, bringing my product management learning to design. As simple as that. This should be your pitch. Okay. Because see, product managers are evaluated based on their analytical and logical thinking. If you are clearly able to show this, you're sorted. Cool. That makes sense. Does Thank that you. answer your question? Yeah, it does. That's Okay. what I'm thinking right now. Okay. Thanks. Gautam, go ahead. Yeah, hi Rajan. Hi. First of all, I just wanted to say that I really enjoy your content on Instagram,
Thanks, man. Especially that design system wala reel that while you were explaining that masala wala dibba and all. That was really funny. Nice. I have one question. Like, I'm from a civil engineering background, and like recently transitioned into, like, not recently, it's about 2 years now. Transition into UX. So I just wanted to build a career in tech. That's why. Now, like, I have become confident in the in my skills, and like I have learned so far. But like I'm still figuring out like which domain I should specialize in. Like I'm particularly like interested in e-commerce, though I'm not sure if I should commit to it or like better to explore different domains before specializing into these only. You are very early in the journey to ask yourself this question. Okay, so Right. you should actually stop asking this question. The thing is that when you're early in your journey, it's the time when you should be exploring all the categories, because you never know. E-commerce might sound interesting to you right now, but down the line in 1 or 2 months, you'll be like, oh shit, what is this boring stuff? And it might be the case where social might sound very interesting to you. So try to do all the categories one by one, and wherever you stay for the longest is the category made for you. After that, start specializing. On day zero, you cannot decide what to specialize in and what not to specialize in. So I think you should actually try everything. Whatever you get in your scope, just go and do it. As simple as that. Okay, got it. Yeah. I like, frankly, this is very early for you to ask this question. You should not be asking this question. If someone has put this question in your head, show them this. Right. Thank you so much for it. Okay. Guys, Shrishti and Vanshika, I will not be able to take your questions. I'm sorry. Can you please drop those questions in the chat? I'll wait till then. Just drop your questions in the chat. I will put a voice note on WhatsApp answering your questions right after this call. Can you please drop the questions in the chat? Vanshika and iske pehle kaun tha? Shrishti. Yes, I'll copy this question. I will paste it here. And Vanshika ka question. Neha Gupta. Neha, I have listed your question. I will answer all these questions in the community. I will send a voice note right after the call. Shreya Dikshit हो गया. Anyone else जिसका question नहीं answer किया, please drop it in here. Okay, selfie time. Let's end this session with a cute little selfie of everyone. I will take a screenshot. Everyone, please turn on your cameras. Last session में कौन-कौन था? Last session में कौन-कौन था? Last session में हमने क्या किया था, याद है सबको? Please turn on your cameras, guys. Please, 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 please. किसी को कैमरा टर्न ऑन नहीं करना, ये क्या हद होती है यार? बड़े बुरे लोग हो तुम लोग. मैं 3 तक गिनूंगा, कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं अंडी मंडी संडी कर रहा हूं. ओके, जिनको नहीं करना वो मत करें, मैं दुखी हो जाऊंगा. हमने लास्ट कॉल में ये किया था. कैन वी प्लीज रिपीट दैट? एवरीवन ऑन द कैमरा प्लीज. ओके, स्माइल यहां रखना है, यहां रखना है. स्माइल गाइस. I'll make you guys do the most weirdest things. I'm sorry. But yeah, I have taken the picture. Thanks for joining in, guys. The next session, whatever we are doing, we will drop a message on WhatsApp. We have an Instagram channel also now. We have Discord. Jahan aana hai, wahan aa jao. Maze karo, mauj banao. Don't be too serious. Bye.